to the second edition of Diabetes and Pregnancy Summit, brought to you by the Integrated Health and Wellbeing Council, India's premier institution for health awareness, advocacy, and behavior change. And I am Kamal Narayan, CEO of ISW Council, your host for the session today. So before we move on to talk more about gestational diabetes, let us have a glimpse of what happened in the first edition of Diabetes in Pregnancy Summit, which happened last year. To achieve this dream of healthy India, we have to first defeat gestational diabetes. And we are fortunate that to step up this fight, we have with us today the most prominent crusaders against gestational diabetes and most passionate champions of women health. Prevention of diabetes starts before birth. Hence, we have to focus, my slogan, focus and the fetus for the future. If it is new India, it is young India. And if it is young India, it to a great extent depends on the energies, the strength of youth. So we cannot allow the energies of the youth and the strength of the youth to get unoptimally remain utilized or underutilized because of the constraints of he or she being diabetic. Early diagnosis, proper diet adjustments, proper exercise during pregnancy, lifestyle changes, probably usage of insulin, which is the only drug which can take care of gestational diabetes. Ensuring that women are in the optimal health during pregnancy and perhaps even before pregnancy. That would be very, very critical to ensure the future health of the nation. Along with the doctors are patients also. I think the same way we need to now reiterate about anemia and the GDM part and keep on harping. We need lot of public awareness programs, be it in front of the movies, in the OTT, then whatever, even in the serials, everywhere I suppose. We do have this testing of 75 gram glucose and that, but I still feel that we need to do some research that how do we test, making it much more easier for people to test. Swasthya, Shiksha and Swavilamban, they are the basic facts which will work. If I am educated, I will talk to you. If I am uneducated, even if you come to my doorstep, I may deny to talk. We will not allow India to become the diabetic capital. We will not allow the second place to become first. In fact, we'll make the second place go far, far behind and catch up, as the word was used. Most awaited and exciting and informative India Diabetes Quiz 2021. Let's begin the game, guys. People with diabetes should eat food that is high in A, fat, B, fiber, C, sugar, or D, salt. It should be option B, fiber. And the answer to this question is, it is B, fiber. Congratulations. Bengaluru Diabetes Masters, congratulations for the first position. We will be leaving with something that you guys gave us, so thank you so much for that. May this be the Pehla Kadam, the start point for the pledge that you will take, the Shapath for 1,000 days to change your own lifestyle, because we need you to be the change you want to see. जेस्टेशनल डायबिटीज या गर्भावस्था के दौरान होने वाली शुगर की बीमारी एक लगातार बढ़ती हुई समस्या है जो भारत में तकरीबन हर 5 गर्भवती महिलाओं में से कम एक को प्रभावित कर रही है। ये कंडीशन शहरों के या गांव के, अमीर गरीब सभी तरह के परिवारों को प्रभावित करती है। आज जरूरत है कि जेस्टेशनल डायबिटीज मेलिटस के बारे में हम घर घर में जागरूकता
और इसको ध्यान में रखते हुए हमने आज ये प्रोग्राम हिंदी में करने का निश्चय किया है, जिससे कि हम इस इंफॉर्मेशन को ज्यादातर लोगों तक पहुंचा सकें। सेहतमंद महिलाएं और तंदुरुस्त बच्चे एक हेल्दी और सशक्त समाज की नींव होते हैं, और ये जरूरी है कि हम सभी वो सारे प्रयत्न करें जिससे कि समाज की हर महिला और हर बच्चे के स्वास्थ्य का ख्याल रखा जाए। पिछले कई सालों में ISW काउंसिल में हम इस मिशन पर काम कर रहे हैं, और इस लक्ष्य को पाने के लिए हमने एक महत्वाकांक्षी प्रोग्राम जिसका नाम शपथ 1000 दिन या शपथ 1000 डेज है की शुरुआत की, जिसके माध्यम से हम एक ऐसे आयुष्मान भारत की नींव रखने का प्रयास कर रहे हैं जहां हर महिला स्वस्थ हो और हर बच्चा सेहतमंद हो। जेस्टेशनल डायबिटीज की इस दूसरी समिट में आज हमारे देश के जाने माने डॉक्टर्स, हेल्थ एक्सपर्ट्स और महिला स्वास्थ्य के चैंपियंस जुड़ रहे हैं। अपने इस फर्स्ट सेशन में हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली डायबिटीज को समय रहते कैसे डायग्नोज किया जा सके और इसके उपचार और डायग्नोसिस को हर गर्भवती महिला तक पहुंचाया जा सके। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं भारत के जाने माने गायनेकोलॉजिस्ट और देश में IVF की नींव मजबूत करने वाले डॉक्टर ऋषिकेश पाई। डॉक्टर ऋषिकेश पाई ब्लूम IVF के निदेशक हैं और फेडरेशन ऑफ गायनेकोलॉजी सोसाइटी ऑफ इंडिया, जो कि देश में कार्यरत करीबन 40,000 OBGYNs की संस्था है, के प्रेसिडेंट इलेक्ट भी हैं। हमारी आज की दूसरी खास मेहमान है डॉक्टर हेमा दिवाकर, जो कि देश में महिला स्वास्थ्य को बढ़ावा देने वाली एक प्रमुख हस्ती है। डॉक्टर दिवाकर द एशियन रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर स्किल ट्रांसफर, जिसे आर्टिस्ट फॉर हर के नाम से भी जानते हैं, की चेयरमैन है और ISW काउंसिल के मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ संबंधित कार्यों को की एडवाइजर भी हैं। डॉक्टर दिवाकर ने पिछले 2 सालों में शपथ 1000 डेज के मिशन को देश के कई राज्यों में पहुंचाया है। हमारे साथ डॉक्टर नंदिता पालसेतकर, जो कि देश की एक मशहूर स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं और इंडियन सोसाइटी ऑफ असिस्टेड रिप्रोडक्शन की प्रेसिडेंट इलेक्ट भी हैं। डॉक्टर पालसेतकर फॉक्सी की प्रेसिडेंट भी रह चुकी हैं और देश में कोई भी कपल इनफर्टिलिटी की वजह से निसंतान न रह जाए, इस मिशन को सालों से इस मिशन पर काम कर रही हैं। तो स्वागत है डॉक्टर नंदिता पालसेतकर। हमारे साथ डॉक्टर इशी खोसला, जो कि एक क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हैं, कॉलमनिस्ट हैं और ऑथर भी हैं। देश की जाने मानी न्यूट्रिशनिस्ट हैं डॉक्टर इशी खोसला, जो कि सालों से न्यूट्रिशन पर लोगों को इंफॉर्मेशन, जागरूकता पहुंचा रही हैं अपने कॉलम्स के द्वारा, मीडिया में आने वाले उनके आर्टिकल्स के द्वारा। और इसी के साथ साथ उन्होंने एक हेल्दी फूड की कंपनी जिसका नाम होल फूड्स है, उसकी भी शुरुआत की, और वो कई सारे स्थानों पे, अस्पतालों में हेल्दी कैफे भी को भी चलाती हैं। सो डॉक्टर इशी खोसला, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। तो और आज के हमारे सारे मेहमान अपने अपने क्षेत्र में बहुत सारे अवार्ड्स, बहुत सारे सम्मानों से भी नवाजे जा चुके हैं। तो बहुत बड़ी लिस्ट है उनके अवार्ड्स की, तो मैं उन सारे अवार्ड्स का नाम नहीं ले रहा, बट तो स्वागत है आप सभी का इस सेकेंड डायबिटीज एंड प्रेगनेंसी समिट का, जिसका लक्ष्य है, जिसका उद्देश्य है कि हम कैसे प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली इस बीमारी, इस कंडीशन को प्रिवेंट कर सकें या इफेक्टिवली मैनेज कर सकें, जिससे कि उससे होने वाले स्वास्थ्य पर प्रभावों को, या तो माँ पर और बच्चों पर, दोनों प्रभावों को रोका जा सके। तो शुरुआत करते हैं आज के प्रोग्राम की विद डॉक्टर हेमा दिवाकर। डॉक्टर दिवाकर, जेस्टेशनल डायबिटीज को पहले, इससे पहले कि हम लोग उसके और पहलुओं में जाएं, मेरा निवेदन होगा कि क्या आप जेस्टेशनल डायबिटीज को आम लोगों को समझ में आने वाली भाषा में समझा सकें कि ये जेस्टेशनल डायबिटीज होती क्या है, कैसे होती है, क्या रोकी जा सकती है, और कब पता चलता है कि किसी को जेस्टेशनल डायबिटीज है?
जी नमस्कार कमल जी, धन्यवाद फॉर येट अनदर अपॉर्चुनिटी। आज के प्रोग्राम आप हिंदी में चला रहे हैं, तो पहले सबसे मैं बात कहना चाहती हूँ कि भाषा की परिभाषा जो है हमारे देश में, वो सबसे बड़ी एक दिक्कत है। क्योंकि कोई भी डॉक्टर हो, कोई भी हेल्थ केयर वर्कर हो, तो पहले बहुभाषा में वो चैंपियन होनी चाहिए। क्योंकि जेस्टेशनल डायबिटीज में खास करके काफी सारी चीजें हमको उन परिवार को और महिला को समझाने की परिस्थिति आती है। क्योंकि ये जो है जेस्टेशन का मतलब है प्रेगनेंसी। डायबिटीज तो सब घर घर की कहानी है, सभी लोग जानते हैं डायबिटीज क्या है, मतलब हाई ब्लड शुगर होना। प्रेगनेंसी के अवस्था में यदि वो महिला के खून का आप जांच करें और खून का जांच में आपको पता चला कि नॉर्मल से बढ़कर ये शुगर लेवल्स है, तो उसको हम कहते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज इन प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी में डायबिटीज में हो सकता है क्या? वैसे काफी आमतौर से कई महिलाओं को वो सुनते ही दिक्कत होती है, अरे हमारे उम्र तो अभी 20 है, 25 है, इस उम्र में डायबिटीज की आप बात कर रहे हैं डॉक्टर, ऐसे कैसे होगा? लेकिन ये प्रेगनेंसी जो एक स्पेशल कंडीशन है, जिसमें प्रेगनेंसी हार्मोन्स जो हम बोलते हैं, उससे शुगर के प्रमाण में दिक्कतें हो सकती है। तो हर महिला को, हर प्रेग्नेंट महिला को ये समस्या नहीं होती है, क्योंकि हर 10 महिलाओं में 7 महिलाएं कैसे न कैसे अपने खुद के शरीर के इंसुलिन को बढ़ाते हुए और प्रेगनेंसी हार्मोन्स को टक्कर देते हुए अपने शुगर्स को कंट्रोल कर लेते हैं, संभाल लेते हैं। लेकिन 10 में से 3 महिलाएं जो है वो ये चीज नहीं कर पाती। जब वो ये नहीं कर पाती, प्रेगनेंसी हार्मोन्स जो है उनको अपर हैंड मिल जाता है और शुगर लेवल्स का इम्बैलेंस हो जाता है, और हाई शुगर्स इन प्रेगनेंसी, इस चीज को हम जेस्टेशनल डायबिटीज कहलाते हैं। लेकिन इसका ये है अहमियत कि महिला को तो कोई परेशानी नहीं होती, मतलब ये सिम्टम्स एंड साइंस जो हम बोलते हैं, बहुत सारे दिक्कत होना, अरे मुझे हाई शुगर है, मुझे पता चल गया, ऐसे बिल्कुल नहीं होता। ये बहुत ही साइलेंट प्रॉब्लम है। जब तक आप जांच नहीं करोगे तब तक आप समझ नहीं पाओगे कि ये 10 महिलाओं से वो 3 कैसे पकड़े जाए। तो इसके लिए हम गए साल भी शपथ प्रोग्राम में हमने कहा था कि पहला कदम, हर महिला को पहला कदम लेना चाहिए और हर डॉक्टर को वो पहला कदम लेना ही लेना चाहिए। वो क्या है पहला कदम? पहला कदम है डायबिटीज है या नहीं प्रेगनेंसी में, उसका जांच करवाना, ब्लड टेस्ट करवाना, 75 ग्राम ग्लूकोज का चैलेंज देते हुए। अभी तो आजकल के सोशल मीडिया के रूप में 100 स्टेप्स चैलेंज, 1000 सूर्य नमस्कार चैलेंज, ऐसे चैलेंजेस तो कई देते रहते हैं। ऐसे 75 ग्राम ग्लूकोज के चैलेंज देते हुए हम हर महिला को गर्भावस्था में 3रे महीने और 6ठे महीने में यदि एक सिंगल स्टेप टेस्ट जो है वो करवाए, और उससे हमको पता चलता है कि ये महिला डायबिटीज इन प्रेगनेंसी कहलाती है या नहीं। अगर ये जांच से पता चल गया दिस इज अ केस ऑफ जेस्टेशनल डायबिटीज, तो वहां से हमारी अलग सा जर्नी की शुरुआत होती है। तो 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स, भारत के हर प्रेग्नेंट महिला को हर प्रेगनेंसी में हर मौके पे 3रे महीने और 6ठे महीने में टेस्ट तो जरूर करवाना चाहिए। अगर यदि आप मोटे हो, छोटे हो, कम उम्र के हो, जास्ती उम्र के हो, फैमिली हिस्ट्री है या नहीं, उसका कोई परवाह नहीं, आपको करवाना ही करवाना है। और याद रखिए कि कोई आपको सिम्टम्स नहीं होगा, अरे मेरे खानदान में नहीं है, मैं स्वीट्स नहीं खाती, मुझे नहीं हो सकता, ऐसे टालिएगा नहीं। हर किसी को ये होने का संभव है और आपको टेस्ट जरूर कराना है। तीसरा जो है सबसे मुख्य जो मैं कहना चाहती हूँ, अगर टेस्ट में डायबिटीज ऐसे आ गया डायग्नोसिस, तो प्लीज 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 आप घबराइएगा नहीं, क्योंकि ये प्रॉब्लम है प्रेगनेंसी में जरूर, हम मानते हैं, लेकिन ये जो प्रॉब्लम है इसका सोल्यूशन भी है, प्रश्न भी है और उत्तर भी है। क्योंकि अगर हम पहचान लिए ये टेस्ट से कि आपको शुगर जास्ती है, तो उसका हम समस्या का हम हल भी कर सकते हैं
आपको सलाह देते हुए, डाइट का सलाह, लाइफस्टाइल का सलाह, टैबलेट्स का, इंसुलिन का, जो चाहे वो सलाह देते हुए फिर आपका शुगर्स को नॉर्मल रेंज में हम ले आ सकते हैं, ताकि पेट में पलता हुआ आपका बच्चा बिल्कुल इसके बारे में नहीं जानता कि मम्मी का शुगर क्या है। कैसे न कैसे हम उसको ठीक करके ही छोड़ेंगे, यदि आपका आप भी 2 कदम आगे चले तो थैंक यू सो मच। हाँ, तो प्लीज डोंट वरी एंड बी रेडी टू फाइट द डायबिटीज। थैंक यू सो मच डॉक्टर दिवाकर। तो आपने बताया कि जेस्टेशनल डायबिटीज प्रेगनेंसी में होने वाली एक खास मौके पे होने वाली समस्या है, और ये किसी को भी हो सकती है। इसके लिए कोई स्पेशल कंडीशन इन्वॉल्व नहीं है, या होना जरूरी नहीं है। तो और आपने बताया कि 10 में से 3 महिलाएं, और भारत जैसी जनसंख्या में 10 में से 3 महिलाएं एक बहुत बड़ा नंबर है जो इस तरीके की जेस्टेशनल डायबिटीज का शिकार, या इस तरीके की जेस्टेशनल डायबिटीज जिनको हो सकती है। मैं डॉक्टर पालसेतकर से जानना चाहूंगा कि डॉक्टर पालसेतकर, अगर इस लेवल पे ये समस्या है तो उसका जो इम्पैक्ट है, उसका प्रभाव क्या बच्चे पे बहुत ज्यादा खराब पड़ता है अगर जेस्टेशनल डायबिटीज हो किसी को, या माँ पर जेस्टेशनल डायबिटीज होने का प्रभाव ज्यादा पड़ता है? क्या ये लाइफ लॉन्ग रहती है, या जो है ये डायबिटीज कुछ समय के लिए ही होती है? क्या इसको अगर ट्रीट ना किया जाए तो क्या ये लाइफ लॉन्ग रह सकती है? थैंक यू कमल जी। आई थिंक दिस ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है जहां हम बात कर सके डायबिटीज, जेस्टेशनल डायबिटीज के बारे में। जैसे डॉक्टर हेमा ने कहा कि 30% हमारे पेशेंट्स में ये डेवलप हो सकता है, एंड उसका असर दो तरीके से हो सकता है। एक माँ पे हो सकता है और एक बच्चे पे हो सकता है। अगर माँ पे आप ले लो तो माँ का वजन बढ़ जाता है, फिर उसके यूरिन इन्फेक्शंस बार बार हो जाते हैं अगर अनट्रीटेड डायबिटीज हो, क्योंकि शुगर जो है यूरिन में एक्सक्रीट किया जाता है। और दूसरी चीज है जो आपने सेकंड पार्ट में हमें पूछा कि उसका इफेक्ट बाद में हो सकता है क्या। नॉर्मली जिन लड़कियों को प्रेगनेंसी में डायबिटीज हो जाता है उन्हें 40 टर्न होने के बाद, 35-40 के बाद डायबिटीज होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो इसलिए जब मेरे पास ऐसे पेशेंट्स आते हैं और उन्हें डायग्नोज हो जाता है डायबिटीज, स्पेशली रिस्क फैक्टर्स हम देखते हैं कि आईवीएफ में जरा इंसिडेंस ज्यादा होता है, क्योंकि एज अगर लड़की का ज्यादा हो, आजकल मेरे पास तो पेशेंट्स आते हैं जो 38, 39, 40 पे प्रेग्नेंट हो जाते हैं, तो उनका चांस ज्यादा होता है। फिर पॉलीसिस्टिक ओवरी जो है उनमें जेस्टेशनल डायबिटीज ज्यादा होता है। तो ये सब जो पॉपुलेशन है उन्हें ये एक वार्निंग साइन है कि अगर आपको प्रेगनेंसी में डायबिटीज हुआ है तो व्हेन यू टर्न 40-45 आपको डायबिटीज हो सकता है। तो इसलिए दिस इज अ प्रिवेंटेबल डिजीज, इट्स अ कंप्लीटली लाइफस्टाइल डिजीज। तो मैं पेशेंट्स को भी बोलती हूँ अगर प्रेगनेंसी में डायबिटीज हो तो आप खाने के बाद थोड़ा चल लो। Walking is a very simple exercises which actually brings the blood sugar down. Of course, दवाई की भी जरूरत पड़ती है, बट नॉर्मल प्रेगनेंसी में भी हमारा जो जेनेटिक्स है इंडियन लोगों का, इट्स प्रो डायबिटोजेनिक। मतलब वो जीन हमारे में होती है, और अगर हम ज्यादा खाए, ज्यादा वजन बढ़े या सेडेंट्री लाइफस्टाइल करे तो हम डायबिटोजेनिक हो सकते हैं। तो इसलिए मैं हर एक जो हर एक पेशेंट जो प्रेग्नेंट होती है उसे बताती हूँ कि खाना खाने के बाद, कुछ खाने के बाद प्लीज थोड़ा चलो। हम हिंदुइज्म में बोलते हैं शतपावली, तो खाने के बाद वो शतपावली लेना बहुत जरूरी है। सेकंड है इफेक्ट ऑन द चाइल्ड। आई थिंक चाइल्ड पे बहुत सारा इफेक्ट्स हो सकता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। द मेन थिंग इज कि बड़ा बच्चा हो जाता है,
वेट बढ़ जाता है। मतलब नॉर्मल बच्चा अगर 2.5 से 3 किलो होता है तो डायबिटीज में 4 किलो का बच्चा पैदा होता है। वो बच्चे में प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, मतलब डिलीवरी के ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर जो हम बोलते हैं, डिलीवरी में प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, सिजेरियन रेट ज्यादा हो सकता है, या अगर नॉर्मल डिलीवरी हो गया हो तो ये शोल्डर जो है वो अटक जाता है, तो हमें डिलीवरी में दिक्कत हो जाती है। दूसरी चीज जो है कि ये बच्चों में 8 मंथ 9 मंथ में सडन डेथ्स हो जाते हैं, सडन IUFD, तो वो बहुत ही धोखादायक चीज होती है, हमें बहुत डर लगता है उससे। सो इसलिए अनकंट्रोल्ड डायबिटीज रखना बहुत मुश्किल है, इसके ये इफेक्ट्स हो सकते हैं। अगर अनकंट्रोल्ड डायबिटीज पहले 3 महीने में होगा तो अबॉर्शन रेट बढ़ जाता है। जो अबॉर्शन रेट नॉर्मली 15% है वो 20-25% हो जाता है। तीसरी चीज है बच्चे में व्यंग आना, मतलब डिफेक्ट्स आना, कोई हार्ट का डिफेक्ट या कोई किडनी का डिफेक्ट वगैरह, इसे हम बोलते हैं कॉन्जेनाइटल एनॉमलीज। तो नॉर्मल पेशेंट में कॉन्जेनाइटल एनॉमलीज जो है वो 2 से 2.5% ही है। बट अगर अनकंट्रोल्ड डायबिटीज होगा, आपका ग्लाइकोसिलेटेड मतलब बहुत अनकंट्रोल्ड डायबिटीज होगा, किसको पता नहीं होगा, तो 10% तक बच्चे में डिफेक्ट्स आ सकते हैं। ये सब इफेक्ट्स प्रेगनेंसी में होते हैं, और जब ये बच्चा 30-40 साल का होगा तो उसे डायबिटीज डेवलप होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो नॉट ओनली डज इट अफेक्ट द चाइल्ड जब वो पेट में होता है, बट जब वो बड़ा होता है, अडल्ट होता है, तब भी इसका ये डायबिटीज का इफेक्ट उस पे जाता है। तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ डायबिटीज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और उसके जो इफेक्ट्स है वो बच्चे पे नहीं आने चाहिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच डॉक्टर पालसेतकर। तो मतलब जो इम्पोर्टेंट बात आपने बताई कि अगर जेस्टेशनल डायबिटीज होती है और अनकंट्रोल्ड रहती है, अगर डायग्नोज नहीं होती, तो उसके बहुत सारे लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट हो सकते हैं माँ पर भी और बच्चे पर भी। इसके पहले कि बट इसमें से एक इम्पॉर्टेंट चीज जो डॉक्टर हेमा ने भी बताई, और मैं डॉक्टर ऋषिकेश पाई के पास जाना चाहूंगा। डॉक्टर ऋषिकेश पाई, डॉक्टर हेमा का मानना है कि उन्होंने कहा कि स्क्रीनिंग एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि जो कि डॉक्टर पालसेतकर ने भी कहा कि अगर अनकंट्रोल्ड डायबिटीज रहती है या डायबिटीज डायग्नोस नहीं हुई तो उसका एक बहुत दूरगामी प्रभाव पड़ सकता है। और इसके लिए जरूरी है कि ऑलमोस्ट यूनिवर्सल स्क्रीनिंग हो हर प्रेग्नेंट महिला की, जिसको वो चाहे 75 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज चैलेंज वाला टेस्ट हो या जो भी दूसरे माध्यम है। तो आप फॉक्सी के पास्ट में भी प्रमुख कर्ता धर्ता रह चुके हैं और आगे फॉक्सी के प्रेसिडेंट बनने वाले हैं। आपकी जो करीबन 38,000 मेंबर्स हैं फॉक्सी के, गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्ट्रिशियंस, ये एक प्रमुख इंटरफेस है हेल्थ केयर का किसी प्रेग्नेंट वुमेन के बीच में। तो आपका क्या मानना है कि इस तरीके के टेस्ट क्या यूनिवर्सली हम कर पा रहे हैं डायबिटीज को लेकर के, और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो कहाँ पर गैप है और उनको हम कैसे फिल कर सकते हैं? तो शुक्रिया, मेरे को आपने इस बहुत सी इम्पोर्टेंट एक विषय है डायबिटीज इन प्रेगनेंसी, इस पे चर्चा करने के लिए आपने मुझे बुलाया। और ये मेरा ख्याल ये है कि एक कॉम्प्रिहेंसिव कह तो प्रेगनेंसी में जो 2-3 इम्पोर्टेंट मेजर प्रॉब्लम है उनको गठित करना बहुत जरूरी है, ताकि हम एक साथ में पूरा स्क्रीनिंग कर सकते हैं, ताकि पहले 3 महीने में हम जेनेटिक जो डिसऑर्डर्स है वो है कि नहीं देखना जरूरी है। जेनेटिक रीजन से बच्चों को हानि पड़ती है। और एक जो हमारे देश में थैलेसीमिया का भी प्रॉब्लम है, वो भी स्क्रीन करना जरूरी है एट द सेम टाइम। और रूबेला का भी स्क्रीन होना जरूरी है। यदि रूबेला निगेटिव है तो पेशेंट को वैक्सीन देना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बाद में जो अगले 3-4 महीने का मेन प्रॉब्लम है, यानी ब्लड प्रेशर है, एनीमिया है और डायबिटीज है, तो ये तीनों को इकट्ठा देखना बहुत जरूरी है। और जैसे मैं जब सेक्रेटरी जनरल था फॉक्सी का 2016 में,
प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान चालू किया था प्रधानमंत्री जी ने IMA और फॉक्सी के साथ, जहाँ फ्री चेकअप जो प्रेग्नेंट वेमेन है उनको फ्री एंटीनेटल केयर दिया जाता है हर 9th of every month पे, और अभी उनको मॉडिफाई करके दूसरा भी यानी सुमन करके प्रोग्राम भी गवर्नमेंट ने चालू किया है। तो ये सब जो प्रोग्राम है इसमें जो कॉम्प्रिहेंसिव स्क्रीनिंग डायबिटीज का तो हो ही रहा है और ये होना भी जरूरी है। मेरे को लगता है कि जो कुछ भी हम करेंगे ना एकदम कम इंफॉर्मेशन में करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इंफॉर्मेशन ओवरलोड बहुत ज्यादा है आजकल, बहुत हम भूल जाते हैं। ताकि सबको यानी जो माताएं हैं, उनके हस्बैंड्स है, उनके मदर इन लॉज है, उनको भी इंफॉर्मेशन मिलना जरूरी है। उनके साथ जो सोशल वर्कर्स है, NGOs है और जो आशा वर्कर्स है, उनको इंफॉर्मेशन मिलना जरूरी है। और साथ ही साथ जो गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर के गायनेकोलॉजिस्ट है, उनको भी वही इंफॉर्मेशन मिलना जरूरी है कि बाबा स्क्रीनिंग करना, ब्लड प्रेशर लेना, हीमोग्लोबिन टेस्ट करना और डायबिटीज का स्क्रीन है कि नहीं देखने के लिए 75 ग्राम देके 140 के ऊपर लेवल होएगा तो उनको इमीडिएटली ट्रीटमेंट चालू करना, ये सब इकट्ठा करना बहुत जरूरी है। तो मेरे और जैसे कि अभी हाल ही में 1 हफ्ते पहले आई थिंक हमारी मैटरनल मोर्टेलिटी भी कम हो चुकी है, तो वो बहुत ही केरला महाराष्ट्र ने तो बहुत ही अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड दिखाया है। तो ये सब मेरे को लगता है कि अच्छे हम सही ट्रैक पे चल रहे हैं, गवर्नमेंट सही ट्रैक पे चल रहा है और हम और भी आगे जाके अच्छा काम करने मेरे को आशा है कि हम अच्छा काम करेंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर पाई। तो इम्पोर्टेंट बात आपने जो रखी कि डायबिटीज की स्क्रीनिंग तो एक बहुत जरूरी है ही, साथ साथ ब्लड प्रेशर और हीमोग्लोबिन और बहुत सारी, और वो एक विमेन हेल्थ का जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, जो मैंने अभी शुरुआत में भी कहा कि अगर हमें एक हेल्दी, एक आयुष्मान, एक स्वस्थ देश या भारत बनाना है तो महिलाओं का स्वस्थ होना उतना ही जरूरी है। और महिलाएं नहीं, बालिकाओं का भी होना, जो किशोरावस्था में वो स्वस्थ हो, क्योंकि अगर पूरी लाइफ साइकिल में एक महिला हेल्दी होगी तभी वी विल बी हैविंग जनरेशंस ऑफ हेल्दी पीपल। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर पाई। हमारे साथ डॉक्टर शशांक जोशी, जो कि भारत के अगेन एक बहुत ही नामी जो है डायबिटोलॉजिस्ट हैं, और डॉक्टर जोशी डिपार्टमेंट ऑफ डायबिटोलॉजी और एंडोक्रिनोलॉजी लीलावती हॉस्पिटल, जो कि मुंबई का एक बहुत ही प्रसिद्ध अस्पताल है, उसके डिपार्टमेंट के में कार्यरत हैं। डॉक्टर जोशी, हम लोग डायबिटीज इन प्रेगनेंसी की बात कर रहे हैं आज अपने इस समिट में, जो कि 2nd एडिशन है। इस दिशा में लास्ट ईयर हमने जेस्टेशनल डायबिटीज डे, जो कि GDM डे है, 10th of March में इसकी शुरुआत की थी। इस साल कुछ समय देर से हम इसे कर रहे हैं। तो डॉक्टर जोशी, डायबिटीज एक बहुत बड़ा इश्यू है, आप उसको जानते हैं। इंडिया में हम लोग कैपिटल नहीं, लेकिन वी आर नंबर 2 इन द डायबिटीज प्रेवलेंस। जेस्टेशनल डायबिटीज, हम लोग गायनोकोलॉजिस्ट से हमने समझा कि ये एक ऐसी कंडीशन है जो कि प्रेग्नेंट महिलाओं में होती है, एटलीस्ट कम से कम 30% ऑफ देम कैन बी डायग्नोज्ड ऑफ इट। तो ये जेस्टेशनल डायबिटीज क्या एक्चुअली हमारी जो डायबिटीज बर्डन है हमारी देश का, उसको भी ऐड कर रही है? क्या उसमें भी इसका इम्पैक्ट हो रहा है? क्या बच्चे जो जेस्टेशनल डायबिटीज की से हो रहे बच्चे, जिन माओं को जेस्टेशनल डायबिटीज है, क्या दे कैन कैरी फॉरवर्ड दिस डायबिटीज? तो थोड़ा आप डायबिटोलॉजिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें थोड़ा सा और प्रकाश डालेंगे? तो कमल जी धन्यवाद। हमारी जो अंतरराष्ट्रीय मधुमेह संगठन है, जिसको हम इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन बोलते हैं, उसका साउथ ईस्ट एशिया का मैं चेयरमैन हूँ। और हमको आपने सही बताया कि 10 मार्च को डॉक्टर शेषैया का बर्थडे होता है, वही दिन हम भारतीय जेस्टेशनल डायबिटीज या मधुमेह दिन मनाते हैं और उसमें जागरूकता करनी है, और वो काफी बार कोइंसाइड करता है इंटरनेशनल वुमेन डे के साथ। तो ये आपने बताया कि मल्टीपल जनरेशंस को इम्पैक्ट करता है। जब गर्भवती स्त्री को मधुमेह होता है तो उसको
10 साल 15 साल के बाद मधुमेह होने की शक्यता लगभग 90% लक्ष्य ठीक है, क्योंकि गर्भवती स्त्री को जब दूसरे या तीसरे ट्राइमेस्टर में जब मधुमेह का डायग्नोसिस होता है तो एक्चुअली उसको टाइप 2 डायबिटीज ही होना है। और ये स्ट्रेस होती है प्रेगनेंसी में, क्योंकि हम क्या करते हैं कि बच्चों को डबल खाना खिलाते हैं, कि गर्भवती स्त्री को और बच्चे के लिए डबल खाना खाते हैं तो कैलोरिक लोड होता है, कार्बोहाइड्रेट लोड होता है। इसके ऊपर से अपनी जो बीटा पेशी रहती है पैंक्रियास की वो थक जाती है, उसके ऊपर स्ट्रेस आता है और उसके वजह से क्या होता है कि मधुमेह आ जाता है। और जैसे ही प्रेगनेंसी खत्म हो जाती है और गर्भवती स्त्री एक बच्चे को पैदा करती है तो वो मधुमेह निकल जाता है। लेकिन हमने रिसर्च से देखा है भारतवंश में कि करीबन 5 या 10 साल में ही वही स्त्री को मधुमेह हो जाता है, और वो जो बच्चा है जिसका जन्म हुआ है उसको भी एक 20, 30, 40 साल के बाद मधुमेह होने की शक्यता का परसेंटेज 90% के ऊपर आ जाता है। तो 2 जनरेशन को हम इम्पैक्ट कर रहे हैं। तो जो माताओं का भोजन और लाइफस्टाइल के ऊपर सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में बहुत ज्यादा एम्फोसिस देने की जरूरत है। हमारे यहाँ की जो प्रचलित लाइफस्टाइल हैबिट्स है वो कभी कभी गलत हो जाती है, और उसके वजह से मधुमेह और जेस्टेशनल डायबिटीज का परसेंटेज पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा भारतवंश में है। आपने सही बताया कि भारत को हमको डायबिटीज केयर कैपिटल बनाना है। भारतवंश में नंबर 2 है अभी रैंक पे वर्ल्ड में, चीन के बाद, लेकिन हमको डायबिटीज केयर कैपिटल बनाना है। लेकिन जेस्टेशनल डायबिटीज में हम सबसे ज्यादा ये कर रहे हैं। अभी दूसरी एक बहुत खतरनाक चीज मैं बताना चाहता हूँ कि दुनिया में कोविड के पहले हर साल 4 मिलियन लोगों की मौत होती थी मधुमेह से, और वो आंकड़ा अभी 2021 में जो हमारा इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन का एटलस दिसंबर 10 को जो रिलीज हुआ उसमें वो आंकड़ा बढ़ के 6.5 मिलियन हुआ है। और उसका प्रमुख कारण बताया जाता है कि पूरे दुनिया में बढ़ने वाला जेस्टेशनल डायबिटीज और बच्चों का डायबिटीज, टाइप 1 डायबिटीज के हम कैपिटल है, जेस्टेशनल डायबिटीज के हम कैपिटल है दुनिया के। तो हमको ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग मात्रा पे जागरूकता करके मधुमेह अपने जो गर्भवती स्त्रियों में बचाना है, और उसके लिए संतुलित आहार, व्यायाम, और जिनके घर में फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज की पहले, उनको बहुत ज्यादा रिस्क रहती है, तो वो बचाव करना बहुत जरूरी है। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। और जेस्टेशनल डायबिटीज ये पहली साइन है कि वो माता को और उसके बच्चे को बाद में डायबिटीज होने की संभावना है, तो उनको बाद में पूरे लाइफ में उनके एक अच्छी जीवन शैली मेंटेन करके उनको डायबिटीज प्रिवेंशन करना चाहिए, और हर साल 2 साल में उनकी डायबिटीज की जांच करनी भी उतनी जरूरी है। तो इसलिए हमको ये वॉर फुटिंग पे लेना है, और मैं आपकी सराहना करता हूँ कि आपने ये बहुत महत्वपूर्ण विषय की चर्चा कर रहे हैं, लोगों को ज्ञान बांट रहे हैं। हमारे सब ऑब्स्टेट्रिशियंस और गायनेकोलॉजिस्ट और हमारी न्यूट्रिशनिस्ट मैडम भी है यहाँ पे, तो मैं सबका शुक्रगुजार हूँ कि मधुमेह की जो हमारी एक डायबिटीज मुक्त दुनिया होना बहुत मुश्किल है, लेकिन गर्भवती स्त्रियों में मधुमेह मुक्त होना ये अशक्य नहीं है। उसके लिए लगने वाली जो हमको स्ट्रॉन्ग लाइफस्टाइल चेंजेस कर सकते हैं, उससे हम प्रेगनेंसी विद डायबिटीज काफी हद तक प्रिवेंट कर सकते हैं, और जीवन शैली से 90% हम मधुमेह प्रेगनेंसी में मैनेज कर सकते हैं। इसलिए उसके ऊपर बहुत ज्यादा एम्फोसिस देना बहुत जरूरी है, और मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि हमको आपने बुलाया और आपसे बात करने की एक मौका दिया। थैंक यू सो मच डॉक्टर जोशी। एक्चुअली आपने जो तथ्य सामने रखे वो काफी भयावह तो है ही हैं, और उनके साथ साथ एक जो हमारा मिशन है और जो मेरे ख्याल से जो संस्थाएं हैं, फॉक्सी या आर्टिस्ट फॉर हर, ISW काउंसिल, इन सब के साथ काम करते हुए ये मिशन जरूर लेना जरूरी है कि हम कैसे कम से कम प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली डायबिटीज को कम से कम कर सकें, और ना सिर्फ उसको मैनेज किया जाए बल्कि जैसा आपने बताया कि अगर महिलाएं, हम ऐसा समाज बनाएं, ऐसे परिवार में उनको इंस्पायर करें या उनके लिए वो सारी परिस्थितियां बनाई जाएं कि वो एक एक्टिव लाइफस्टाइल, एक ऐसी लाइफस्टाइल को फॉलो कर सकें जिससे कि डायबिटीज जैसी
जेस्टेशनल डायबिटीज जैसी समस्याएं भी ना आए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सभी ने, और डॉक्टर जोशी आपने भी, डाइट एक बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से जेस्टेशनल डायबिटीज की समस्या हो सकती है, या किसी भी डायबिटीज को लेकर के उसका एक बहुत बड़ा रोल है। और जैसा कि आपने बताया कि भारत में प्रचलन है कि महिलाओं को का जो न्यूट्रिशनल वो है एलोकेशन परिवार में, वो डबल से ज्यादा या ट्रिपल भी हो जाता है प्रेगनेंसी के दौरान। हालांकि ये भी एक समस्या है कि बाकी दिनों में हमारे यहाँ पर ज्यादातर महिलाओं को आखिरी में खाने को मिलता है और सबसे कम खाने को मिलता है, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान ये सिचुएशन बदल जाती है। तो डाइट का जो रोल है, तो इसके लिए मैं डॉक्टर इशी खोसला, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध न्यूट्रिशनिस्ट हैं, से जानना चाहूंगा। डॉक्टर खोसला, अगर जेस्टेशनल डायबिटीज और किसी भी तरीके की डायबिटीज को प्रिवेंट करना है या मैनेज करना है कि उसके इम्पैक्ट को मिनिमाइज किया जा सके, तो जो सबसे पहला आफ्टर स्क्रीनिंग जो सबसे पहला इंटरवेंशन है वो है कि कैसे डाइट को कंट्रोल किया जाए, या कैसे उस तरीके की डाइट को अडेप्ट किया जाए जो कि इस तरीके की डिजीज से हमें प्रोटेक्ट करने में और उससे इफेक्टिवली मैनेज करने में हेल्प कर सके। तो आपका क्या मानना है, किस तरीके की डाइट ओरिएंटेड इंटरवेंशंस या चेंजेस से इसको किया जा सकता है? आपके अपने काम में कैसे पेशेंट्स आए जिनको आपने जेस्टेशनल डायबिटीज में हेल्प किया और वो लोगों ने इफेक्टिवली उसको मैनेज किया, और आगे भी जो जीवन में इसकी रिपीटिशन होने के या रीअकरेंस होने के चांसेस हैं वो भी अच्छे से मैनेज हो पाए? आपका क्या कहना है डाइट को लेकर के इस एरिया में? मैम, आपका माइक म्यूट में है। सबसे पहले तो मैं आपको कंग्रेचुलेट करूंगी कि आप लोगों ने एक इतना अच्छा सब्जेक्ट चूज किया, जो बहुत ज्यादा चर्चा उसके ऊपर अभी तक इतनी हुई नहीं है कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट्स एंड अदर फॉर्म्स ऑफ डायबिटीज। क्योंकि जैसे और विशेषज्ञों ने भी बताया कि ये खाली मदर की प्रॉब्लम नहीं है और ये खाली वो 9 महीनों की प्रॉब्लम नहीं है, इसके जो इम्पैक्ट है वो आगे जनरेशंस तक जाते हैं थ्रू द फीटस, और उसकी मैकेनिज्म्स भी अब हम काफी अच्छे से समझ रहे हैं कि ये कैसे होता है और क्यों होता है। तो सबसे पहले मैं एक बहुत कॉमन सेंस और बेसिक चीज आपसे शेयर करूंगी कि जहां तक डायबिटीज का सवाल है, ये कोई नई बीमारी नहीं है, ये कोई नई कंडीशन नहीं है, ये तो हमारे शास्त्रों में भी डॉक्यूमेंटेड है। तो इसके रिस्क फैक्टर्स जो हैं उसकी क्या वजहें हैं, जाहिर है हमें पता होने चाहिए, लेकिन जो हम कन्वेंशनल रिस्क फैक्टर्स इसके समझते थे वो अब लगता है लागू नहीं हो रहे। क्योंकि अगर ये कहना कि सब महिलाएं जो जिनको डायबिटीज हो रही आजकल सभी गलत खा रही हैं, सभी एक्सेसिव शुगर खा रही हैं, या सभी का लाइफस्टाइल इतना बुरा है कि इतना बढ़ गया ये चीज, जितनी जानकारी, जितनी इंफॉर्मेशन, जितनी मेडिकल इंटरवेंशन इन प्रेगनेंसीज एंड इन जनरल अवेयरनेस बढ़ी है, उसके लॉजिकली एक कॉमन सेंस व्यू होना चाहिए कि ये कम होना चाहिए ना, लेकिन ऐसा नहीं है, बिल्कुल उल्टा है। इनफैक्ट कि जैसे जैसे हम इतनी साइंटिफिक एडवांसेस आईवीएफ तक पहुंच गए, जहां पर कोई उम्मीद ही नहीं थी बच्चा होने की, वहां पर हमने ऐसे ट्रीटमेंट कर लिए जो सोच भी नहीं सकते थे। इतनी एडवांसमेंट के बाद ये क्यों? राइट? सो दिस इज अ वेरी वेरी आई वुड से इम्पोर्टेंट एरिया, जिसको मैं हमेशा ये कहती हूँ, जब तक आप कॉज नहीं एड्रेस करोगे तो आप मैनेज नहीं कर पाओगे, क्योर नहीं कर पाओगे। क्योर इज इन दी कॉज, जब उसके रिस्क फैक्टर्स असल में समझे जाएं। जब मैं प्रैक्टिस करती थी कुछ साल पहले, तो मेरे पास अगर जेस्टेशनल डायबिटीज के पेशेंट आते थे तो सीधा यही था कि भैया वजन कम करो, और वो महिलाएं जेन्युइनली मोटापे की शिकार थी। दे वर गेनिंग मोर वेट देन दे वर according to their trimester,
एंड देयरफॉर दे वर गेनिंग टू मच वेट। तो यही था कि भाई वजन कम करेंगे, कार्बोहाइड्रेट कंट्रोल करेंगे और इनकी एक्टिविटी बढ़ाएंगे, इनका स्ट्रेस ठीक करेंगे और ये शुगर इनकी ठीक हो जानी चाहिए, और वो काफी हद तक होती भी थी। लेकिन आज हम जो देखते हैं कि जो महिलाएं ओवरवेट भी नहीं हैं, जो महिलाओं का वेट इतना मतलब आई वुड से समटाइम्स दे हैव इवन लॉस्ट वेट ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी बिकॉज दे आर सो सिक, तो उनकी जो डाइजेस्टिव हेल्थ है वो इतनी खराब है, कुछ पचता ही नहीं है, तो एक्सेस वजन का तो होना सवाल ही नहीं है। येट उनकी शुगर्स बढ़ी हैं, यही उनको जेस्टेशनल डायबिटीज हुई है। फिर ऐसे भी हैं जो जनरली बहुत सेडेंट्री हैं या जो कन्वेंशनल थे, वो जो एक्टिव हैं महिलाएं, ये चीजें इसका मतलब ये इंडिकेट कर रही हैं कि कहीं ना कहीं कुछ मिसिंग लिंक्स हैं। और वो क्या है मिसिंग लिंक्स, मैं आपको बताती हूँ। जो हमारी बॉडी में एक जो माइक्रोबायोम है, जो कीटाणु हैं जो आंखों से नहीं देखते लेकिन वो हमारी पूरी बॉडी में है और गट में मैक्सिमम होते हैं, जिनको हम माइक्रोबायोटा कहते हैं। ये कीटाणु जो है ये हमारे फेवर में हो तो ये हमारी हेल्थ को बचाते हैं, जब ये अनफेवरेबल होते हैं तो ये हमारी सेहत को बिगाड़ते हैं। तो इनका डिस्टर्बेंस होना, चाहे उसकी वजह कोई लाइफस्टाइल में कोई भी हो, वो हमारी शुगर्स को या हमारी वेलबींग को या कोई भी बैलेंस जो भी है उसको बिगाड़ते हैं। तो ये अब यो रिसर्च नई निकल रही है कि जैसा हमारा माइक्रोबायोम होगा वैसे ही हमारी डिजीज प्रोफाइल या हेल्थ प्रोफाइल रहेगी। तो इसमें हम देख रहे हैं कि जो महिलाओं की एक्चुअली डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हैं उनको ज्यादा प्रॉब्लम है, जो जिनका पेट का मोटापा ज्यादा है उनको ये प्रॉब्लम है, जिनको ब्लोटिंग ज्यादा रहती है, जो अपनी न्यूट्रिशनल स्टेटस जिनका कमजोर है, जिनका प्रोटीन कम है, जिनमें ओमेगा 3 फैट्स कम है, जिनका विटामिन डी, मैग्नीशियम, क्रोमियम कम है, उनमें ये ज्यादा पाया जा रहा है। और जिनमें बहुत ज्यादा ऑटो इम्यून प्रॉब्लम, फैमिली हिस्ट्री हो या खुद थायराइड वगैरह के भी शिकार हो, उनमें ज्यादा है। और जिनको मेडिकेशंस बहुत ज्यादा, एंटीबायोटिक्स या हार्मोन्स बिकॉज ऑफ प्रेगनेंसी, जैसे इन्होंने बताया कि जो आईवीएफ से के द्वारा प्रेग्नेंट होती हैं उनमें ज्यादा है, क्योंकि उनमें हार्मोनल जो ट्रीटमेंट दिया जाता है उसकी वजह से और दवाइयां दी जाती हैं, उनकी वजह से उनका जो गट माइक्रोबायोम है वो डिस्टर्ब हो रहा है। तो मेन हमारा फोकस ये है, और जो मैं आजकल प्रैक्टिस करती हूँ, एक बड़ी एक इसमें और है बिफोर आई गो टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज फूड सेंसिटिविटी। गेहूं को लेकर, दूध को लेकर जो पचा नहीं पाती, जिनको ये प्रॉब्लम पता भी नहीं है कि ये है, लेकिन ये प्रॉब्लम अंडरलाइंग होती है जिससे ये डिसबायोसिस कहते हैं, जहाँ बैलेंस ऑफ गट माइक्रोबायोम जो है वो बिगड़ता है। वो अगर हम चीजों को एड्रेस करें तो अच्छी से अच्छी महिलाएं, चाहे मोटापे की शिकार हैं, चाहे पतली हैं, दुबली हैं, उनकी शुगर्स कंट्रोल होती हैं विद इन अ मैटर ऑफ फ्यू डेज। तो फोकस हमारा ये है कि जो कम्युनिकेशन करी जाए कि हमारी जो पेशेंट है वो आए तो उसको हम अच्छे बैक्टीरिया का बनाने का, अपनी जैसे प्रीबायोटिक बोलते हैं उसकी सॉल्यूशंस दें, टू गिव देम प्रो एंड प्रीबायोटिक्स, टू टेल देम टू हैव द राइट काइंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट। मतलब जो चावल, चीनी और बेकरी प्रोडक्ट्स या ब्रेड्स ये खाते हैं या बहुत ज्यादा अनाज खाते हैं उसका कंट्रोल करें, और द लो ग्लाइसीमिक जिसको बोलते हैं, जो शुगर्स को इतना तेजी से नहीं बढ़ाते वो कार्बोहाइड्रेट, उस पर फोकस करें और एक गुड फैट्स की तरफ फोकस करें। मतलब ओमेगा 3 फैट्स हैं और मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स हैं। इसमें कोई नाम हम जो बोलते हैं ना वो लगता है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन बेसिक मतलब गोइंग बैक टू द रूट्स, घी खाएं, मस्टर्ड ऑयल खाएं, तिल खाएं, नट्स खाएं, और दूध की जो हमारी जो पहले सोच थी कि दूध प्रेगनेंसी में बहुत जरूरी है, जिन महिलाओं को ये हो गया है उनको इनफैक्ट दूध से मतलब दूध से डेफिनेटली इंटॉलरेंस है, चाहे उनको सिम्टम्स होना हो, तो वो अगर ऑल्टरनेटिव मिल्क लें, ये कोकोनट मिल्क है या आमंड मिल्क है, तो उनकी जो इंटेस्टाइन्स हैं वो हील होंगी, उनको जो न्यूट्रिशन है वो मिलेगा, मैल न्यूट्रिशन से बचेंगी, आयरन अब्सॉर्ब होगा, कैल्शियम अब्सॉर्ब होगा। और ऐसी चीजें हम अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में देख रहे हैं। ना केवल शुगर ठीक होती है,
मेरे पास एक महिला आई जिसका वो भी 40 प्लस थी, उसने कंसीव लेट किया, तो रिस्क तो था उसको डायबिटीज का। उसने आईवीएफ के थ्रू किया, उसको ट्विंस हुए। जब वो मेरे पास आई उसको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम तो थी और हीमोग्लोबिन था उनका केवल 8.5। अब प्रेगनेंसी में उसने मुझे साफ मना कर दिया कि मैं आयरन नहीं खाऊंगी, मेरा पेट खराब होता है। तो जब हमने उसकी डाइट में फूड सेंसिटिविटीज की ट्रीटमेंट शुरू करी और प्रोबायोटिक दिया, आयरन नहीं दिया क्योंकि वो मना कर चुके थे, इन्हीं चीजों को देके थर्ड ट्राइमेस्टर में उसी महिला का जिसका हीमोग्लोबिन 8.5 था 12.5। सो यू कैन सी कि जब अंतड़ियां हील हुई, शुगर तो उसको हुई नहीं, एक बारी भी उसकी शुगर नहीं बढ़ी और उसकी ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ा, कोई स्वेलिंग नहीं आई, स्मूथ प्रेगनेंसी, नॉर्मल डिलीवरी ट्विंस की। तो मतलब ये कहना कि ये चीजें जाहिर हैं और ये नई रिसर्च है, क्योंकि अब जो हम रिसर्च में, मैं ज्यादा थोड़ा वक्त ले रही हूँ लेकिन बताने के लिए कि दिस इज सपोर्टेड बाय वेरी गुड रिसर्च टुडे। द गट माइक्रोबायोम ऑफ अ जेस्टेशनल डायबिटिक मदर and the progeny, the neonate, is very, very disturbed and it is not a good microbiome. तो ये अब जांच इस पे हो रही है और तभी इसके हिसाब से स्पेसिफिक इंटरवेंशन भी आएंगी। तो मोटा मोटा मेरा कहने का मतलब है कि जो हम कन्वेंशनल मैनेजमेंट करते थे वो जरूरी है, लेकिन उसके आगे भी हमको समझ के इसको एड्रेस करना है जिससे हमारी आगे की जनरेशंस बचें। थैंक यू सो मच डॉक्टर खोसला। आपने जो एक्चुअली फोकस किया और जो कि बहुत इम्पोर्टेंट भी है कि महिलाओं का, और महिलाओं का ही नहीं, वैसे हर ह्यूमन बीइंग का, हर इंसान का जो ओवरऑल होलिस्टिक न्यूट्रिशन है वो इस तरीके का होना चाहिए जो उसके स्वास्थ्य को सपोर्ट करता हो। और बहुत सारे जो ऐसे चैलेंजेस आते हैं, चाहे वो माइक्रोबायोटा से रिलेटेड हो या गट हेल्थ को डिस्टर्ब करने वाले हो, उन सब को पहले से, मतलब आई थिंक इन अ लाइफ साइकिल वी कैन, इट शुड बी मैनेज रादर देन कि हम जब प्रेगनेंसी का एक दौर होता है, वो मेरे ख्याल से हमारी अंडरलाइनिंग जो समस्याएं होती हैं वो ज्यादा मैनिफेस्ट होने लगती हैं ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन में। डॉक्टर दिवाकर, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात, बहुत इंपॉर्टेंट जो है, जो हमारे मिशन शपथ 1000 पीरियड्स का भी एक बहुत फोकल पॉइंट है कि एनीमिया मुक्त भारत बनाना। और डॉक्टर इसी खोसला ने भी कहा कि एक होलिस्टिकली अप्रोच होना चाहिए न्यूट्रिशन को लेकर के। और चैलेंज जो हमारे देश में है वो ये है कि हम होलिस्टिक अप्रोच नहीं ले पाते हैं और चीज़ों को जब और जहां होती हैं उनको वहां एड्रेस करने की कोशिश करते हैं, इसकी बजाय कि उसको एक लाइफ साइकिल के तौर पे एड्रेस किया जाए। तो ये जो बड़े चैलेंज हैं, अब भारत में 55% हर दूसरी और दूसरी से दो से भी ज्यादा महिलाएं अनीमिक हैं। अब अनीमिक हैं तो उसके साथ साथ कई सारी और भी डिफिशियंसीज एसोसिएटेड होंगी। तो अगर हमें एक तो इश्यू है कि डायबिटीज, और जो कि प्रेगनेंसी में होने वाली डायबिटीज को मैनेज करना है, लेकिन जीवन वही है, शरीर वही है। अगर कुछ कमियां पहले से चली आ रही हैं तो वो कमियां और बढ़ जाती हैं और फिर उसके बाद बच्चों में वो कमियां और बढ़ करके जाती हैं, जो कि डॉक्टर शशांक जोशी ने भी कहा कि उन बच्चों में 90% तक के चांसेस होते हैं कि उनको डायबिटीज होगा 10 साल 20 साल या 40 साल की उम्र में। तो आपका क्या मानना है, कैसे ये एड्रेस किया जाए इस प्रॉब्लम को? कुछ ऐसे मतलब रामबाण कुछ मंत्र हैं क्या कि जिनसे इस देश की ये समस्याएं, जो कि चल तो दशकों से रही हैं, 70-80 साल से हम यही समस्याएं झेल रहे हैं, हालांकि पहले हम 100 साल जीते थे। खोसला जी ने पुराणों की और उपनिषदों की भी बात की कि हमारे उनमें भी इनका दे हैव बीन काइंड ऑफ। तो कैसे ये चैलेंज एड्रेस किए जाए एज अ वुमेन हेल्थ एक्सपर्ट, एज अ गायनेकोलॉजिस्ट, एज अ रिसर्चर, एज अ ट्रेनर, क्या सोचते हैं आप, कैसे चेंज करें इसे? जी कमल जी, आपने पूछा कि इसके लिए कोई मंत्र है या रामबाण है। जरूर है। वॉक द टॉक, जैसे हमने और आपने मिलके शपथ लिया था। आप बोल रहे हैं कि सदियों से हम इसके बारे में बोले जा रहे हैं, लेकिन कुछ करे तब। तो इसलिए 1000 डेज जर्नी का जो शपथ हमने ले रखे हैं,
सब कुछ तो एक दिन में 1 मिनट पे तो नहीं हो सकता, तो इसलिए इसको 1000 डेज, वो 1000 डेज इसलिए नाम रखा गया है कि फर्स्ट 1000 डेज ऑफ लाइफ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसका फोकस जो आता है पूरे लाइफ साइकिल और लाइफ कोर्स में। फर्स्ट 1000 डेज का हम प्रेगनेंसी से शुरुआत करते हैं, क्योंकि वो जीवन का शुरुआत ही उसके पेट पे पलता हुआ बच्चे का वो फर्स्ट दिन है। तो 280 डेज ऑफ प्रेगनेंसी और फर्स्ट ईयर ऑफ द चाइल्ड दैट इज 365 डेज और सेकेंड ईयर ऑफ द चाइल्ड अनदर 365 डेज, कुल मिला के ये 1000 डेज की ये जर्नी है। तो प्रेगनेंसी में महिलाएं हम तक पहुंच सकती है या हम महिलाओं तक पहुंच सकते हैं, दैट इज अ गुड टारगेट। मतलब पूरे भारत पे देखिए हर पॉइंट इन द लाइफ साइकिल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि डॉक्टर ऋषिकेश भाई ने कहा कि एनीमिया को भी हम जांच करना चाहते हैं, हाइपरटेंशन को भी देखना चाहिए, शुगर्स भी देखना चाहिए, वेट देखना चाहिए। ईशी जी ने कहा कि हमको खाने पीने का हम पहले से उनको एक लाइफस्टाइल बनाए रखना चाहिए। शशांक और नंदिता जी ने भी कहा कि आज जो करना चाहेंगे करेक्शन, वो 2 पीढ़ियों पे उसके असर पड़ती है, लॉन्ग टर्म उसके असर पड़ती है। तो इसलिए हमको ये जरूरी है कि किसी एक पॉइंट पे हमको फोकस करके वहां से हमारी जर्नी शुरुआत हो रही है। तो फिर प्रेगनेंसी में हर महिला के यदि ये 3-4 मुख्य चीजों की जांच हो गई, सिर्फ जांच ही नहीं, उसके करेक्शन भी हुए और उसके काउंसलिंग भी हुए, तो वहां से आगे की पीढ़ी के शपथ के साथ साथ का जो जर्नी है वो तो फ्रॉम इलनेस टू वेलनेस ही होगा, ऐसा हम मान के चल रहे। करने के लिए हमको बहुत कुछ है, क्योंकि ये नंबर्स जो है हमारे देश में वो तो काफी बड़े हैं, लेकिन हम और आप जैसे मिल रहे हैं डिजिटल माध्यम पे, तो वो एक साधना है टू रीच द लास्ट माइल, जैसे हम कहते हैं, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, हम हमेशा कहते आ रहे हैं। तो इसलिए आज के दिन में हम 100 में 100 प्रेग्नेंट वुमेन के एनीमिया के जांच, ब्लड प्रेशर के जांच और ट्रीटमेंट, शुगर के जांच और ट्रीटमेंट करें, तो आज के लिए और आगे आने वाली दिनों के लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम कंट्री के हेल्थ को सुधार सकते हैं। क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ, कंट्रीज प्रॉस्पेरिटी, हेल्थी मदर्स मेक हेल्थी बेबीज मेक हेल्थी जनरेशन नेक्स्ट, और देश का स्वास्थ्य सच मानो तो महिलाओं के हाथ में ही है, ऐसे हमारा मान के चलना। थैंक यू सो मच डॉक्टर दिवाकर। तो अब हमारे पास 5-7 मिनट बचे हैं इस सेशन को रैप अप करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट सेशन है जो कि एक बहुत ही जो है जानी मानी अगेन न्यूट्रिशनिस्ट और ऑथर भी हैं, वो उसको होस्ट कर रही हैं, कविता देवगन जी। डॉक्टर पाई और डॉक्टर पालसेतकर, आई विल कम टू यू लेटर क्विकली फॉर योर क्विक इंटरवेंशन और मतलब क्लोजिंग रिमार्क्स। उसके पहले मैं डॉक्टर जोशी के साथ से एक बार फिर से बात करना चाहूंगा। डॉक्टर जोशी, आपने जो एक बात बताई कि डायबिटीज को लेकर के हमारा जो चैलेंज है वो तो है, और ये जो नंबर आपने बताया कि 4 मिलियन की जगह मतलब 40 लाख लोग जो कि प्री कोविड टाइम पे डायबिटीज से मरते थे, उसकी जगह 65 लाख लोग मरे, और जिसका एक बहुत बड़ा रीजन इंक्रीज इन जेस्टेशनल डायबिटीज भी आपने बताया। और जो ये 90% चांसेस हैं कि वो बच्चे जो कि जेस्टेशनल डायबिटीज हुई मदर से होंगे, उनको चांसेस हैं। तो एज अ डायबिटोलॉजिस्ट आप कैसे उसको एड्रेस करने का देखते हैं, और क्या फोकस रहता है, और कब ये महिलाएं, प्रेग्नेंट महिलाओं का जो एक फर्स्ट इंटरवेंशन है हेल्थ केयर के साथ, वो गायनेकोलॉजिस्ट तो हैं ही, बट वो कब ये सिचुएशन आती है कि उन्हें डायबिटोलॉजिस्ट से भी मिलना चाहिए, या डायबिटोलॉजिस्ट का कंसल्टेशन की जरूरत होती है, या डाइट की हमने बात सुनी कि डाइट एक बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज के बारे में भी सभी ने थोड़ा थोड़ा बताया, लेकिन क्या ऐसी भी सिचुएशन होती है कि इसे हमें थोड़ा और एडवांस लेवल पे जाके मैनेज करना पड़े? इंसुलिन जैसी चीजों की क्या रिक्वायरमेंट होती है जेस्टेशनल डायबिटीज को मैनेज करने में, और कैसे इस तरीके का मैनेजमेंट किया जा सके कि इन बच्चों को जो 90% चांसेस होंगे फ्यूचर में, उनके परसेंटेज को घटाया जा सके? सर आप म्यूट में। कमल जी, आपका प्रश्न बहुत सही है। प्रिवेंशन का जो मायना रखते हैं तो सिर्फ
संतुलित आहार, व्यायाम और पॉजिटिव थिंकिंग और कंटिन्यूस स्क्रीनिंग करना। क्योंकि बच्चा हो जो जिसकी माँ को जेस्टेशनल डायबिटीज हो तो उसका वय वर्ष 20 के बाद हर साल उसको जांच करनी चाहिए। उसकी पेट की जो चर्बी है, दो प्रमुख जो रिस्क फैक्टर्स है डायबिटीज के लिए, पहले है कि पेट की चर्बी पुरुषों में 90 सेंटीमीटर के ऊपर और महिलाओं में जो 80 सेंटीमीटर के ऊपर हो गए, या फैमिली हिस्ट्री स्ट्रांग होगी, आपके घर में कोई आपके रिश्तेदार को डायबिटीज है, मदर फादर को डायबिटीज है, ब्रदर सिस्टर को डायबिटीज है, तो वय वर्ष 20 के बाद ही आपको हर साल डायबिटीज की जांच करनी चाहिए, यानी ब्लड टेस्ट करनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि ये फैमिली हिस्ट्री नेगेटिव होगी, आपके पेट की चर्बी कम होगी, तो शायद आप अवॉइड कर सकते हैं। प्रेगनेंसी में जब भी गर्भवती स्त्री पहले बार खून की जांच करती है, जैसे अनीमिया का प्रॉब्लम हेमा जी बता रही थी, नंदिता जी बता रहे थे, ऋषिकेश जी बता रहे थे, तो उसके साथ एक शुगर की जांच करनी बहुत जरूरी है। और अभी तो एक सिंपल स्पॉट टेस्ट भी है शेषा सर का, वो हेमा जी आपको विस्तारित बता भी सकती है। लेकिन हमको स्क्रीनिंग के ऊपर बहुत, यूनिवर्सल स्क्रीनिंग जो बोलते हैं, उसके ऊपर बहुत ज्यादा मायना और एम्फोसिस रखना है। और दूसरा है कि एक जागरूकता करके, अवेयरनेस करके हर महिला को हम डायबिटीज से बचाते हैं, तो उनको डाइट और एक्सरसाइज के बाद हम नॉर्मली टैबलेट नहीं देते। आपने प्रश्न पूछा कि जेस्टेशनल डायबिटीज में इंसुलिन ही देते। इंसुलिन बहुत सेफ है, उसका कोई एडवर्स इवेंट नहीं होता है। मेटफॉर्मिन नामक एक दवाई भी आई है जो कभी कभी हम जेस्टेशनल डायबिटीज में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अभी भी वो थोड़ी एक्सपेरिमेंटल है। तो अभी जो ट्रीटमेंट है 90% संतुलित आहार, यानी कम खाना, सही वक्त पे खाना, स्लोली खाना, जो ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर है वो घंटा या 2 घंटे गैप में स्प्लिट करना, ये सिंपल चीज है, कहीं भी कर सकती है, उसके लिए स्पेशलाइजेशन की जरूरत नहीं है। उसके साथ थोड़ा व्यायाम करना, गर्भवती स्त्री को व्यायाम करना मुश्किल होता है, एक 7 घंटा सोना, हंसते खेलते रहना, टेंशन लेने का नहीं, और फिर शुगर मापते रहना। और शुगर मापने की मशीनें भी अवेलेबल है, उसके लगाने वाले पैच भी अवेलेबल है। और फिर भी यदि फास्टिंग शुगर 90 के नीचे नहीं रही, लंच के बाद की शुगर 120 के नीचे नहीं रही, 3 महीने की एवरेज 6.5 के नीचे नहीं रही, तो फिर हमको इंसुलिन देना पड़ता है। और इंसुलिन के लिए फिर काफी सुपरविजन करना पड़ता है। और ये सबसे बचने के लिए आपने जैसे बताया, कम खाओ, ज्यादा वॉक करो, और प्रॉपरली लाइफस्टाइल चेंजेस करेंगे तो हम डायबिटीज को बचा सकते हैं। और डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन से होने वाली मौत है, वो बचाने के लिए एक सिंपल ABCDEF अप्रोच हम यूज करते हैं कि जिनको डायबिटीज है उनको हम A1C 3 महीने की एवरेज शुगर 6.5 या 7 के नीचे रखते हैं, उनका ब्लड प्रेशर 130 और 80 के नीचे रखते हैं, उनका LDL कोलेस्ट्रॉल 70 के नीचे रखते हैं, उनका डाइट और एक्सरसाइज, D and E is फॉर डाइट एंड एक्सरसाइज, और F is फॉर फीट, क्योंकि उनके जो पैर रहते हैं उसमें भी जख्म हो सकती है। तो हमको क्या है कि डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस को भी अवॉइड करना चाहिए, उनको स्क्रीन करना चाहिए, और मधुमेह को हमको प्रिवेंट करना है पूरा दुनिया से, और हमको दुनिया का केयर कैपिटल बनना है। और ये बन सकते हैं हम, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी हमारी जो आयुष्मान भारत की जो स्कीम है, जन औषधि की स्कीम है, ई संजीवनी की स्कीम है, अभी आपका जो ये अवेयरनेस प्रोग्राम चल रहा है महिलाओं के लिए, गर्भवती स्त्रियों के लिए, मधुमेह के लिए, इससे जागरूकता होके हमको ये चेंज करना चाहिए हमारे लाइफस्टाइल में। आज हम सब जो हम जो सुन रहे हैं, मेरे एक ही दरख्वास्त है कि आप जो भी आप खाना खाएंगे थोड़ा कम खाइए, सही वक्त पे खाइए, थोड़ा स्लोली खाइए, थोड़े से एटलीस्ट 10,000 स्टेप करिए। हमारा अभी योग दिन आ रहा है जून में, थोड़ा प्राणायाम करिए, सूर्य नमस्कार कीजिए, उसके साथ ही थोड़ा 7-8 घंटे सोना बहुत जरूरी है। तो इससे क्या होगा कि हमारे पूरे भारतवंश में मधुमेह का प्रमाण कम हो सकता है, क्योंकि भारत वापस मधुमेह की राजधानी के तरफ आंकड़े दिख रहे जाने वाले, क्योंकि जितना जो भी नेशन प्रॉस्परस होता है वो नेशन में मधुमेह का प्रमाण ज्यादा होता है। तो हमको प्रॉस्पेरिटी के साथ अच्छी हेल्थ और हेल्दी और हैप्पी थीम होनी चाहिए। तो जो भी मधुमेह में हम गर्भवती स्त्रियों में भय आ जाता है कि हमको अभी डायबिटीज हो गया, तो हैप्पी रहना चाहिए, हेल्दी रहना चाहिए, और अपने डॉक्टरों के साथ संपर्क रखना चाहिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर शशांक जोशी। तो नंदिता जी,
आपका क्लोजिंग रिमार्क, क्योंकि एक बहुत बड़ा जो दायित्व और रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे लगता है सारे गायनेकोलॉजी, हेमा जी ने भी वही कहा कि जो हमारी गायनेकोलॉजी कम्युनिटी है, तो ये 100% स्क्रीनिंग हो, उसकी मॉनिटरिंग हो, और बहुत कुछ डायबिटीज मैनेजमेंट आप लोग ही करते हैं, जेस्टेशनल डायबिटीज से जिन महिलाओं को है। तो आपका एज अ लीडर ऑफ गायनेकोलॉजी सोसाइटी, आप पहले भी लीडर नहीं हैं, अभी आप इसार के प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं, आपका क्या मानना है 2-3 लाइन में, अगर क्विकली इफ यू कैन टेल कि हाउ इट कैन बी ड्राइव? आई थिंक कमल जी, ऐसे प्रोग्राम्स करने बहुत जरूरी है क्योंकि लोगों तक हम पहुंच सकते हैं। वो एक है जो अवेयरनेस शशांक और हेमा और ऋषिकेश बोल रहे थे। दूसरी चीज है हमारी ऑर्गेनाइजेशन, जब हम प्रेसिडेंट थे या प्रीवियस प्रेसिडेंट्स भी, क्योंकि डायबिटीज जो है स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स है हमारे देश में 30 मिलियन डिलीवरीज हर साल होते हैं, इतने इनफ डॉक्टर नहीं है। तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है फॉक्सी, उसने एक ये लिया है कि वो ये नॉलेज स्प्रेड करेगी और हमारे गायनेकोलॉजिस्ट डायबिटीज ट्रीट कर सकेंगे। और ये जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है बिटवीन द प्राइवेट डॉक्टर्स एंड द पब्लिक डॉक्टर्स, जो गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स है वो एक साथ काम करके, आई थिंक इट इज ब्रिंगिंग अबाउट अ चेंज, एंड दैट इज व्हाट इज रियली इंपॉर्टेंट। और दूसरी क्वेश्चन है जिसे आपने ऑलरेडी इंक्लूड किया, पोषण। I think what everybody has talked about is lifestyle change, portion, which is very important. So I think this awareness and universal screening is very, very important, which our organizations are definitely push कर रहे हैं कि ये हमारे सब doctors करे हर एक patient के साथ. Sorry, my voice is very bad. नो प्रॉब्लम मैम। तो हमें जस्ट रैप अप करना है, तो मैं लास्ट जो है पॉइंट्स फ्रॉम डॉक्टर ऋषिकेश पाई। आपने 30 मिलियन प्रेगनेंसीज की बात बताई एक साल में भारत में, तो अगर 30% के हिसाब से देखें, जो कि 10 में से 3 की बात थी, तो करीबन 10 मिलियन चांसेस हैं जेस्टेशनल डायबिटीज के। तो डॉक्टर पाई, आपकी ये जो आप फॉक्सी के प्रेसिडेंट बनने वाले हैं, और आपने मान्यता जैसी कई सारी इनिशिएटिव लिए थे जिनको लेकर के पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात हो रही है, ट्रेनिंग की बात हो रही है, क्योंकि जरूरी है कि हर लेवल पे जो महिलाएं डॉक्टर के पास जा रही हैं, OBGYNs के पास जा रही हैं, उनको वो उस लेवल पे ना सिर्फ स्क्रीनिंग के लिए प्रेरित करें, स्क्रीनिंग करवाएं, बल्कि जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस की जरूरत है या फैमिली में अवेयरनेस की जरूरत है। कई बार हो सकता है महिलाओं को डॉक्टर बता भी दें, लेकिन घर वाले वो जो एक माहौल होता है एडिशनल पैम्परिंग जो न्यूट्रिशन को लेकर के होती है प्रेगनेंसी के दौरान, तो ये सारे चैलेंजेस को, तो आपका क्या मानना है? ये मान्यता के अंदर आपने ऐसा क्या मतलब कई सारी चीजें की हैं, और आगे क्या करने की आपको लगता है कि जरूरत है? क्विकली इसके बाद आई विल। थैंक यू कमल जी। तो मेरा जो मैं फॉक्सी के प्रेसिडेंट बनना रहा, तो मेरे 2 स्लोगन है। एक कहने की स्वस्थ नारी सुखी नारी। So basically, if you're a healthy woman, you're a happy woman, and you have a happy family as well. So, and जो है second slogan मेरा है modern technologies transform life. So हमको ये जो समस्या है ना हेल्थ केयर की, ये टेक्नोलॉजिकल व्यू पॉइंट से देखना जरूरी है। तो टेक्नोलॉजी को जो हमारा एक्सेलरेशन है, सपोज वी हैव टू कन्वर्ट हमारी जो प्रेजेंट सोसाइटी है और प्रेजेंट स्टेटस है, जो हमको अमेरिका तक की तरफ लेके जाना है, समझो उनके लेवल के हेल्थ केयर के लिए, उसके लिए हमको मशीन्स की जरूरत पड़ेगी, डेटा, बिग डेटा की जरूरत पड़ेगी। इसलिए मैं बोलते रहता हूँ, मेरे सब कलीग्स मेरे को गुस्सा करते हैं, बट मेरे को लगता है हमारे देश में लेजिस्लेशन लाना पड़ेगा कि कोई भी डॉक्टर कुछ भी ट्रीटमेंट देगा तो डेटा एंट्री तो होना ही मांगता है, ताकि वो डेटा है ना उससे एनालिसिस मिलेगा, क्या प्रिवेलेंस है, कोई भी मेंटल हेल्थ हो, कुछ भी हो, कोई भी आपने पेन उठाया ट्रीटमेंट देने के लिए डेटा एंट्री होना ही मांगता है। तो ये लेजिस्लेशन लाना बहुत जरूरी है इंडिया में। उससे क्या होगा, डेटा मिलेगा, हमको ट्रेंड मिलेगा क्या हो रहा है, तो हम इंटरवेंशन कर सकेंगे, इंटरवेंशन से हमको फीडबैक मिलेगा और हम इंटरवेंशन को मॉडिफाई कर सकते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है। और सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज है वो
यानी कि क्योंकि मैं समझो मेरे सेक्रेटरी को बोलेगा, अरे देखो हर दिन ना जब ये कोई बैठेगा ना तो बोलने का सबको कि डायबिटीज का स्क्रीन करना है, ये करना है, वो पहले दिन बोलेगी, सेकंड डे बोलेगी, थर्ड डे बोलेगी, फोर्थ डे बोलेगी मैं भाग जाती हूँ, मैं नहीं काम करने वाली हूँ। मशीन विल नेवर गिव यू द ट्रबल। मशीन इज द की। जो मशीन लर्निंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन को, रोबोट को उधर बैठा है ना हम लोग ने, ऑटोमेटिक फोन कॉल जाएगा, ऑटोमेटिक ट्रेसिंग होएगा। जो लैंग्वेज में ट्राइबल होएगा तो ट्राइबल के पास भी फोन कॉल मोबाइल से जाएगा, ऑटोमेटिक अटैक होएगा उनके ऊपर, कांस्टेंट फॉलोअप होएगा। मशीन इज द की। आई वाज, नंदिता जी मेरी बिजनेस कलीग भी है और मैं ऑलवेज बोलता हूँ, जो दिन मैं सेक्रेटरी को मशीन से रिप्लेस कर सकूंगा ना, आई हैव वन द बैटल, बिकॉज द मशीन विल नेवर गिव अप। एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम हो जाएगी उससे। नहीं सर, एम्प्लॉयमेंट जो फिलोसॉफी है ना, फ्यूचर फिलोसॉफी है कि थोड़े लोग ही काम करेंगे, बाकी के लोग तो घर बैठ के एंटरटेनमेंट करो, खाना पीना खाओ और एक्सरसाइज करो, उनको फिर एक्सरसाइज करवानी पड़ेगी। वैसे धन्यवाद डॉक्टर ऋषिकेश भाई, आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है कि एक तो जो आपका पहला मोटो है फॉक्सी प्रेसिडेंट बनने के साथ कि स्वस्थ नारी सुखी नारी, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि महिलाएं जो स्वस्थ होंगी वो न्यू, हम लोग कई बार अभी बहुत सारे स्पीकर्स ने बोला, और आप एक टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहते हैं जो हेल्थ केयर डिलीवरी है भारत में, वो भी एक बहुत जरूरी काम है। और डेटा के बारे में आपने कहा, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। एंड देन ओनली हम शायद इन सारी समस्याओं पर सरकार का या प्रोवाइडर्स का ध्यान ज्यादा केंद्रित कर पाएंगे, और इसी के साथ साथ मेरे ख्याल से आम जनता का भी ध्यान उस पर केंद्रित होगा। तो धन्यवाद हमारे आज के सारे स्पीकर्स जो इस पहले सेशन पे जुड़े। जो सेकेंड एडिशन है डायबिटीज एंड प्रेगनेंसी समिट, एक बहुत बड़ा इश्यू है, और भारत को अगर डायबिटीज के चंगुल से छुड़ाना है, या जो हमारी हमने एक ड्यूबियस डिस्टिंक्शन पा ली है कि वी आर, पहले हम कैपिटल थे पूरे वर्ल्ड में और नाउ वी आर इन सेकेंड, बट अगर हमें रियल में केयर कैपिटल बनना है, जैसा कि डॉक्टर शशांक जोशी ने भी कहा, तो हमें इन सारे मुद्दों पर और ज्यादा काम करना पड़ेगा। फॉक्सी, आर्टिस्ट फॉर हर, इसार, ISW काउंसिल, और हम सभी एक्सपर्ट्स, जो आप जैसे एक्सपर्ट्स, मैं एक्सपर्ट नहीं हूं तो हम सभी नहीं, आप जैसे सारे एक्सपर्ट्स इस पर काम करेंगे, तभी हम इन सारी लड़ाइयों को जीत पाएंगे। अगला सेशन में कमल जी एक जरा बोलना चाहता था मैं, सॉरी, कि जी सर, जो मान्यता का हेमा दिवाकर इधर बैठी हुई है आर्टिस्ट की, और हमारी एकदम खास, उन्होंने ही चालू किया, और डॉक्टर नंदिता ने भी अभी लक्ष्य मान्यता का प्रोग्राम किया है महाराष्ट्र में, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट अहम प्रोग्राम भी है। ये जो मूवमेंट है, और आपको मैं कहना चाहता हूँ कि यस्टरडे ओनली इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स ने मान्यता प्रोग्राम को अवार्ड दिया गया था। तो वो जो जहाँ मान्यता बेसिकली क्या है कि हम जो सबको अपग्रेड कर रहे हैं, ये बहुत ही लैंडमार्क प्रोग्राम है, वर्ल्ड वाइड उसका जिक्र हो रहा है, जहाँ हम वॉलंटरीली नर्सिंग होम को अपग्रेड कर रहे हैं। जो आपने प्रश्न पूछा था, मैं मशीन के बातों में मान्यता को टोटली भूल गया, तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट मान्यता के अंदर भी आप अपग्रेड की बात कर रहे हैं और मशीन के थ्रू भी अपग्रेड की बात कर रहे हैं, तो ये जो आपका बेसिक फिलॉसफी है वो सेम है। तो बहुत अच्छा, कॉन्ग्रेचुलेशंस पूरी आपकी कम्युनिटी को, आपको और मान्यता पे काम करने वाले ट्रेनर्स, ट्रेनी सभी को, कि आप इतना अच्छा उसमें अपग्रेड के क्षेत्र पे बढ़ पाए हैं गायनेकोलॉजी में। द नेक्स्ट सेशन जो है इसका विल बी होस्टेड बाय कविता देवगन जी। शी इज अ नोन न्यूट्रिशनिस्ट, शी इज एन ऑथर, बहुत अच्छी अच्छी किताबें उन्होंने लिखी हैं, और शी हैज द लिबर्टी ऑफ होस्टिंग द नेक्स्ट सेशन whether in English or Hindi. I took the liberty of hosting this today in Hindi so that we can take this communication to more people, but I am sure the next one can be in English with all our other speakers. So thank you so much all our speakers today, and we look forward your constant support to continue our fight against anything and everything which is hampering the health of our country, our people, especially our women and child, because they are the foundation of the healthy India, the Ayushman Bharat, which we all want to build, we all dream about. Thank you so much. Shukriya.
Over to you, Kavita ji. You are on mute. Sorry. Here. Thank you, Kamalji. This was a very interesting session which I just witnessed, and we will now move on to the next session. So good evening, everyone. I'm Kavita Devkan, as Kamalji has already introduced me. Today, we have a very, very interesting session lined up for you right after this. The basics have been done in the earlier session. We will take the discussion further with a few more eminent panelists that we have today. This panel discussion is on latest innovations and approaches to diagnose and manage GDM, gestational diabetes mellitus. Now, diabetes is an epidemic today. India is deemed as the world's capital of diabetes. This exponential rise of diabetes in India is mainly due to lifestyle changes, or should I say lifestyle messes. Wrong food habits, low physical activity, increased body weight, especially around the middle area, the abdominal fat. Now, these are some of the primary reasons for increasing the prevalence of diabetes at such a huge rate in our country. But we all know this already. Enough has been spoken about everywhere about the increased prevalence of diabetes. What I want to talk about today is something that not many people know about and talk about, which is that diabetes mellitus affects about 7 to 10% of all pregnancies worldwide. This is actually known as gestational diabetes and can develop during pregnancy in women who don't already have diabetes. There's no history of diabetes in them. In India, in fact, the figure is as high as 5 million women every year. Now, these are staggering statistics. However, despite these huge numbers, there are still no clear-cut golden standard approaches being followed for the diagnosis and management of this disorder. A disorder which, if left untreated, could affect both the mother and the child in several ways, none of which would be good. One of the most effective ways of managing gestational diabetes is by implementing lifestyle changes. And this includes following a healthy, balanced diet, increasing the activity levels if they're low, and self-monitoring of blood glucose levels. Very, very important, but often overlooked. Around 70% of women who develop this disorder during pregnancy are actually able to control their blood glucose with just these lifestyle measures, while the remainder may require pharmacological treatment to maintain good glycemic control. The aim of this session is very clear. That is to ask a very pertinent question. How can we further improve gestational diabetes mellitus diagnosis and treatment? So for today's session, we have invited some of the leading doctors and healthcare experts with a clear-cut aim to evaluate the current and future diagnostic approaches to prediction, diagnosis, management, and prevention of gestational diabetes. We have with us today Dr. Meera Agnihotri, who is a noted surgeon and also the professor and head obstetrics and gynecology at GSVM Medical College in Kanpur. She's also the president of WWW Foundation, which works for the empowerment of women in India. Welcome, ma'am. Dr. Madhulika Sinha, who is a noted gynecologist and obstetrician. She has over 2 decades of experience in obstetrics and gynecology and is currently associated with Aakash Healthcare in New Delhi as its HOD. Dr. Monika Singh is currently associated with the Noida International Institute of Medical Sciences as an assistant professor in its department of OBGYN. Dr. Aakash Chatraparty, consultant of obstetric and gynecology, Paras JK Hospital, Udaipur. And finally, we have Dr. Chandan Kumar Mishra with us, who is associated with Aakash Healthcare in New Delhi as a consultant endocrinology. Welcome to everyone. We will now take the discussion forward. Some of the very basic questions have already been spoken about and discussed in the earlier session about
what is gestational diabetes, what are its common symptoms, its main causes, and who is more at risk. So we will not touch upon them again. In case the viewers find that they need answers for this, they could refer to the earlier session. I would like to move on straight away. Dr. Meera, maybe you could take this question. The current therapy of GDM focuses on tightly controlling maternal glucose levels, resulting in insulin therapy. How effective is that, given that GDM cases continue to rise globally? Dr. Meera. Ma'am? Is she not here? Would Dr. Monika like to take this question, please? Hello, good evening, everyone. Yeah. So the current therapy that we are using for managing GDM, we focus on tightly controlling maternal glucose levels. So we use first line of treatment is obviously the medical nutrition therapy that you talked about. So it focuses on physical activities, increasing moderate amount of exercise, recommending moderate amount of exercise to the antenatal females, and also dietary modifications. These two aspects we club as medical nutrition therapy. That is most important management tool that we use in GDM in early cases or in the milder cases. So now then we switch on to the pharmacotherapy, which includes oral drugs like metformins and insulins. So insulin is obviously the mainstay of the treatment for GDM. So these two drugs are really effective in management and achieving this tight glycemic control that we aim. Along with the along with the pharmacotherapy, that is insulin and the metformin per se, we continue our medical nutrition therapy, that is our tight nutritional control, tightly controlling the caloric requirements and also promoting the exercise, the physical activity in the female. If this treatment protocol is rigorously followed, religiously followed, we definitely achieve the glucose control, the tight glucose control that we aim to achieve. But unfortunately, the patients and the compliance that is required both at the care provider end and the female, the antenatal female that we aim to, is really challenging. So on both the ends, this regular glucose monitoring, regular follow-up, regular visits is required. And if we rigorously and religiously follow, it is very effective in controlling the glucose level that we aim to achieve. So, however, there are so many consensus that the proper guidelines, the uniform guidelines are obviously not very, we have the guidelines that are very specific about management. However, it is not nicely followed everywhere. So this is something that we need to work upon. Thank you. Dr. Kavita.
Sorry for the disruption. The technology was playing hide and seek, but we are back now. And thank you, Dr. Monika, for that lovely answer. That clarifies a lot of things. We will now move on to the next question to Dr. Madhulika. Dr. Madhulika, gestational diabetes usually goes away after pregnancy. But once a patient has gestational diabetes, the chances are that 2 in 3 women, it will return back in future pregnancies. So what are some of the ways to remain free from this and how to safeguard oneself so that it doesn't come back? Yeah, thank you for the question. And very rightly said that GDM goes away, but then once a patient has GDM, she has a chance of getting diabetes later on in her life. And there are chances of getting gestational diabetes in her next pregnancy also. So after delivery, we always tell the patients that, because the patients, they are always very happy that, okay, my sugar is normal now after delivery, because we keep on checking their sugars after normal delivery or cesarean, whatever they had. And once sugars are okay, then they go home with this thing in mind that my sugar is fine. But this thing has to be put in their minds that they have to regularly screen themselves. And a repeat glucose challenge test has to be done, not earlier than 6 weeks and no later than 6 months. Like after 6 weeks, when the patient comes for a return postnatal visit, we should always get a glucose tolerance test done, or even a simple glucose challenge test. What we did in pregnancy, we can simply repeat this. And because many people, they don't want to undertake that glucose tolerance test every 1 hourly. They don't want to give that test. Even if the 2-hour post 75 gram glucose is more than 140, then she is labeled a diabetic, and she has to monitor herself, and she has to undertake those lifestyle factors and medical nutrition therapy, what she had undertaken during her pregnancy. So this screening has to be done at 6 weeks, or you can do after 3 months also, but it should not be done more than 6 months. And depending on the high risk factor, that how obese she is, how was her sugar levels during her pregnancy, was she on only diet management or on insulin, depending on these factors, the screening can be done either annually or after 2 to 3 years, depending on the risk factors. So a regular screening and lifestyle modification is a must for every gestational diabetes. Okay, so very, very clear, in fact. So only way out is that you have to screen yourself very regularly. Yeah. And of course, goes without saying, lifestyle changes and food changes and health changes so that it doesn't come back. And it can be done, right, ma'am? It can be definitely. We usually do after 6 weeks, whenever we call patients, we always do a glucose challenge test, and we have to put them in their minds, because awareness is very important. They have to be aware that they are at risk of diabetes. And once a patient knows that, oh, she has a risk of diabetes, she will put these things, she will accordingly modify her lifestyle and her diet. Very few people, they are very unaware and they don't listen to what we say. But many people these days are very educated, and social media there is a lot on Google also. They always check on Google that, okay, once they have gestational diabetes, they are at risk of diabetes, and they follow whatever lifestyle and things we tell them. And they do regular screening. And we have, in our hospital at least, we always tell them that after 6 weeks, whenever they come for a postnatal visit, they get a repeat glucose challenge test. Great. So this is heartening. The fact is that people are listening, because this is, I think, the only way, like you mentioned, to avoid it from happening again later. Yeah. All right. Thank you, ma'am. Dr. Akansha, we will now move on to you. One of the key elements of the successful management of GDM is the education of pregnant women, like ma'am was also mentioning. Now, patient education has been shown not only to improve the quality of life, but also contributes to better compliance. We discussed this, but I would really like you to go further and add on to what ma'am was saying. If you have any points, Dr. Akansha, to how can compliance be better with women?
Hi, Dr. Kavita, and good evening, everyone. Thanks for putting up this question. First of all, I want to give few inputs to the previous two questions. As Madam said, Dr. Madhulika ma'am clearly said that we must continue this screening. I just want to have a little discussion with Madam. Can we just simplify this postnatal screening with a simple fasting blood sugar rather than giving them a glucose challenge test again? I was just going through the nice guidelines and all. Immediately in their postnatal period, first of all, yes, we need to alter the insulin level, the insulin doses. Most of the patients who are clearly GDM and not type 1 or type 2, we generally have to stop their metformin and insulin. The requirements grow really low if patients are breastfeeding, right? So what we do, like I'm just sharing my personal thing. What we do in our hospital, that we call them at 6 weeks, and we also call them at 12 weeks and do a fasting blood sugar rather than giving a glucose challenge test. The compliance is better, and I feel it is quite relevant also in relevance with the GDM. This is just an additional point. We might be different in our approaches to the patient. Coming back to the patient information, as a gynecologist, I firmly believe and I practice into preconceptional care, counseling, and a lot of written information. Whatever I tell my patients, I try to note that down in their prescription sheet, and we have got some printed leaflets in Hindi and English as well, but yes, preferably in the language they understand, and give them a little timetable, not just the schedule of antenatal visits, but all different tests which are required are even being mentioned in these high-risk patients. One is for a routine low-risk antenatal patients. Then we have certain leaflets for patients who are high risk for GDM with the PIH and so on, those who have low-lying placentas and other issues. So we have separate leaflets for them. Secondly, I try to include some stats in my counseling. You can give them some figures. Sometimes we just explain them कि इसका risk ज़्यादा होगा, आपके baby को इसका risk ज़्यादा हो सकता है. Let's say congenital malformations or developing shoulder dystocia and all. I try to give them some clear figures which are easy to understand and kind of emphasizing on the amount of risk they're exposed to because of these high-risk factors. Like today we are talking about GDM, it could be anything else, any other high-risk obstetric condition. That is what I practice. Yeah, understood. And clearly makes a lot of sense. And the whole point which is coming out here is that it is not just important enough to diagnose, but the fact that this has to be drilled into the mind of women and they need to really understand. And emphasize again and again. Emphasize, that's the point, so that they don't forget and become relaxed about it, because this is a disorder which can come back and this keeps coming. As Dr. Pai sir was also mentioning that we want someone, with artificial intelligence. So till we reach that era that we have a machine doing it, let us do this. Yes, but hopefully we should, of course, that was a very interesting point, and even I agree to what you were saying, that we have to move in that direction. Eventually we need to reach there somehow. Thank you, ma'am. Thank you. Dr. Chandan, thank you for patiently waiting for your question and waiting your turn. What are some of the infrastructural challenges in India as far as rolling out of future treatment models to treat future GDM cases is concerned? What do you see as major challenges? A very good. Am I audible? Yes, sir. A very good evening to all. First of all, I would like to add a couple of points to the earlier questions. Yes. Regarding the earlier speaker, which she was saying, if we can use fasting glucose level at postnatal follow-up, like when we do the postnatal follow-up at 6 weeks or 1 or 2 months later after delivery, then the problem with only doing fasting glucose level is that if the patient has fasting glucose level beyond the cutoff point for diagnosing diabetes, then it is fine. We can diagnose diabetes and accordingly we can institute treatment. But the sensitivity of this thing, fasting glucose level, is lower, and therefore it is recommended to do a glucose challenge test. And so we can do initially fasting glucose level.
If it is in the diabetic range, then fine. If it is not, then we must do glucose challenge test, because if the patient has abnormal values on glucose challenge test, then it has implications. The patient can have values more beyond the cutoff for diabetes. In that case, we will have to institute treatment for diabetes. And even if the cutoff values are not normal and not beyond the diabetic range, that is, if the values lie in the pre-diabetic range, then it is called as pre-diabetes. And for that also, the studies say that there is a role for metformin. And if we do prescribe metformin along with lifestyle changes, it definitely has been found to reduce the progression from pre-diabetes to diabetes. So the importance of doing glucose challenge test at this point of time. Next, coming back to the question, what are the challenges? So the main problem with dealing of GDM cases is the enormity of the problem. As has been highlighted multiple times throughout the discussion, the problem of GDM is huge because of the increasing epidemic, because of epidemic rise in the proportion of obesity and the diabetic cases, and therefore we are also getting huge number of patients of pregnancy complicated by diabetes. So the main problem is the enormity, and therefore to whatever measures we are to take or the government has to take, the problem is that it has to reach at the grassroots level. So the problem is the measures or whatever the programs are implemented, it has to reach the general masses even in the rural setup. Secondly, the important thing is that we have to educate the women of reproductive age group, and all women of reproductive age group, right from the time of puberty till the menopausal, that is the potential fertility age group. They have to be educated. They have to be told about the risks associated with diabetes and what are the complications that might develop during the diabetes if glucose levels are not controlled, and what are the safe contraception options, because unplanned pregnancies are a major problem, and if unplanned pregnancies do occur, there is a risk for both the fetus as well as for the mother. So the effective contraception practices have to be taught to the patient. Next, the patients have to be also counseled regarding the use of insulin, as we have discussed that the safer option in pharmacotherapy for patients with diabetes during pregnancy is insulin. Metformin or other anti-diabetic, like one is also glyburide, is also another anti-diabetic agent which is used, but metformin or glyburide, they are not the first choice drugs. Insulin is the first choice drug. But many patients, if we tell them that they have to take insulin, they are many a times hesitant. So it is our duty to educate and sensitize such patients during the preconception period regarding the safety of insulin, and that insulin is the safer option, and if required, they should opt for and not be hesitant to accept insulin during the course of pregnancy. And they should also have a healthy lifestyle changes so as to decrease the epidemic of obesity. They have to have normal weight, so the lifestyle changes do play a major role, because the most important thing is prevention. If we can halt it before pregnancy, so that is a better thing. So we have to have programs and educate the patients regarding to have control their weight in the normal range. Clear. So what is coming out very clearly from what you said, Dr. Chandan, is that communicating very clearly to the woman, the pregnant woman, even maybe before she gets pregnant, as to what will be her better options, is definitely a conversation every doctor must have with the patient. And also, yes, I have noticed this huge block against insulin, and frankly, this is news to me too. Since I'm not from this field, that insulin is safer, because that is not the popular conception, thinking around that insulin could be safer. So I guess education in that regard is very, very important. Thank you so much. One more thing, there is flexibility with regards to insulin. Insulin dose we can modify on a daily basis. So if there are issues, we can handle it, and we can taper the dose, we can decrease the dose. If required, we can increase the dose. Even on a daily basis, we can change the dose. So there is much flexibility with the use of insulin. And nowadays, there are multiple easier technologies available for insulin. Earlier, it used to be given by vials and syringes. Now, pen devices are easily available and are very easy to use and with minimal pain, and it's very easy for patients to use. It's a good option for them, basically. Yes. Great. Thank you so much. Dr. Madhulika, I'll come back to you, ma'am. Recent innovations are potentially leading to more effective treatments for both diabetes type 1 and type 2.
Now, what are some of the upcoming treatment models which you feel can effectively help treat GDM cases? Madhulika ma'am? Maybe. Can you hear me? Yeah. Yeah. Yes, I can hear you. I can see you also now. Thanks. Yes, upcoming treatment models are there which can effectively treat GDM. These days, as told by Dr. Chandan, insulin and its analogs have come, and they are very safer analogs which can be used. And there are pen devices which are being used by the patients. So now there are various recommendations by various societies. While treating GDM, there has been lot of guidelines and there is lot of controversies every time whenever we attend a GDM conference or here only while we are in a panel discussion. It is always a very controversial thing that what tests should be done and what medicine has to be given. So it all depends on a one-to-one conversation with the patient. Like ACOG recommendations is that there is no preference on whether you use oral and oral hypoglycemics or you use insulin. In gestational diabetes, if the sugar is high, you can use anything. NICE, according to the NICE guidelines, metformin is the first choice over insulin and glyburide. There are 2 oral hypoglycemics which are safely used in pregnancy. And there are various conditions. There are various conditions where we can use metformin, or if metformin is not tolerated by the patient, we can use glyburide. So these are the 2 safer oral hypoglycemic alternatives we have with us. So there are many innovations, and these oral hypoglycemics have brought in fact, I must say this is a very big innovation, because many people previously, they used to be afraid of insulin. Oh, gestational diabetes, high sugar, now I have to take insulin. So this was a major drawback while treating patients. But now after we have oral hypoglycemic agents, it has become, this has come as a major breakthrough, I must say. And patients are also very comfortable because once or twice daily dosage is there, and there are least chances of hypoglycemia with these patients, with these medicines. So this is a major breakthrough in the treatment for gestational diabetes. Now, coming to insulin, previously we used to have regular insulins, which was to be taken every 4 hourly, 6 hourly. Then came the long-acting insulin, and it used to cover the fasting hyperglycemia. And now there are many safer insulin analogs. This answer will be very well addressed by Dr. Chandan, I think, because he's an endocrinologist, but as an obstetrician also, because the treatment of gestational diabetes is not only done from an obstetric point of view, but it involves a multidisciplinary team, which involves an obstetrician, a dietitian, a physician, an endocrinologist, because we have to see a lot of aspects in these patients. And now, apart from regular insulin, there is aspart insulin, lispro insulin. Lispro has been controversial, but there are many insulin analogs which are very safe, and they are being used by pen devices. So this has been a major breakthrough in the treatment of gestational diabetes. And now we see patients have excellent blood sugar control. They come with a very good sugar control, and we are able to take them to term, like 37 till 37 weeks. Previously, because of very bad sugar control, or if the sugars were very high or they were very erratic, we had to deliver them preterm, or there was always a high risk with them. But these days, with excellent sugar control, we see very less, a few macrosomia or shoulder dystocia, although they are there, and these are always the risk factors. But these medicines have been a major breakthrough in the treatment of gestational diabetes, and they provide excellent sugar control. Thank you, ma'am. Dr. Monika, if we can come back to you. Now, the traditional approach to diagnosis of this disease or disorder, if I may say, has been about testing all the patients the very same way
and then expecting everyone to follow or behave in a certain way. There's like straitjacket way of diagnosis and treatment. Today we have, like as Dr. Chandan and ma'am also mentioned, that we have opportunity to use, a lot of other new ways of treatment, and I suppose for diagnosis as well, because there has been a discussion on that as well earlier during this session. So what is your opinion on how the future will pan out? How should it be done? Should it be, like ma'am said, one-on-one, or should we have like very clear straitjacket way of diagnosis and treatment? Yes, definitely. A more personalized approach is definitely better. But first, I want to address to some challenges that we face, during the patient care and diagnosis of GDM patients. So, through these challenges only we get to know what kind of lacuna that we are facing and where we need to kind of develop ourselves. So, like at patient level, there is always a lack of awareness, more so in rural population, right? So in urban still we have facilities, but in rural population there is really a big educational gap that is left. There is a big lacuna that patients don't really know about what are the consequences. So as already said, that we have to make our patients aware of all the risk factors that are associated during her pregnancy, during the labor, during delivery, maybe a normal delivery or cesarean section, and to her offspring, to the baby. As we say, the babies born to these diabetic mothers are also at high risk of having to develop diabetes mellitus in future life and having problems like obesities, as in the female. So 2 out of 3 females may develop GDM in subsequent pregnancies, and also in later life they are high risk of developing overt diabetes like type 2 diabetes mellitus in the later life. So everything related to diabetes mellitus should be informed to the antenatal female, should be informed not only to antenatal female but every female. So there is a role of preconceptional counseling, there is a role of counseling her relatives and every female for that matter, because the major source of information, knowledge to any female is her family, her friends, and now media. So mass media plays a very important role, right, in educating females. So this in this era of media and social media platforms, so we must have this information to every female. So information guides, charts, and charts on exercise, role of exercise, role of food, and how to monitor glucose and what is the role of monitoring glucose is very important. So this is something that would be very beneficial to every female, because this is a way of life that they must have, having a healthy lifestyle, having better healthcare and healthcare seeking behavior. So if they have a better healthcare seeking behavior, automatically we'll be able to diagnose their condition at a early at early stages, or we may effectively control the situation without landing up in complication. Similarly, if there is awareness, we must have all these diagnostic tools and treatment tools available to every female across the country, not only urban, to our rural population also. So for that matter, we must develop some cost-effective, evidence-based, and patient-friendly approach to diagnose and treat their condition. So it's so we have this dilemma every time. So there's never a common consensus ki how we must manage a patient of GDM if a patient is coming to ourselves. So a common consensus must be there. An evidence-based approach must be followed, and it must be patient-friendly, so that every female, every antenatal female is, having this opportunity to, have this treatment, and she should have proper knowledge and everything. And challenges on provider basis, like on our side, on healthcare side, we must be aware about every the risk, the
the healthcare facilities that are available, the standardized treatment that is available, and our manpower should be trained enough, because every time it's not only obstetrician is never, obviously obstetrician is not always the first contact to the antenatal female. There are various healthcare workers, ASHA workers, and the Anganwadi workers that come first in contact with the antenatal females, especially in the rural population. So they must also be made aware of everything. So awareness and compliance, obviously. So this is the lacuna that we are facing in management and treatment of our females, antenatal females, and management of GDM cases. So this is something that we must work upon, and knowledge and accessibility is of prime importance here. So awareness and compliance, and if I can add some kind of consensus, because I think we will need many more discussions to reach a solid consensus on everything. A common ground. I guess, right. But I guess we will reach there, because the aim is same for everyone here. Exactly. Yeah. Dr. Chandan, I'll come back to you, sir. Now today we've touched upon this, but we'll just touch upon it a little more. Today we have the opportunity to use technologies like machine learning, data analysis. Whole lot of discussion happened in the earlier session on this, which can help provide personalized diagnostic care. Personalized diagnostics and of course care and treatment. So what is your opinion on that? Where are we on this? Are we moving forward, or is anything happening on these lines? Dr. Chandan. Now, everybody will agree that managing a patient with GDM basically involves a multidisciplinary approach. People from multiple specialties have to be involved, like endocrinologist, be it gynecologist, fetal medicine, and dietitian. Everybody has a role to play. And apart from regarding the use of technologies, the recent advances in insulins have been discussed. There is something. There are two more technological advances which I would like to touch upon. There is something called CGM. There is something called CGM, which is continuous glucose monitoring, and there is also insulin pump. So what is a continuous glucose monitoring? In this, basically a device is attached to the patient's skin, and which basically is not visible from outside, because it can be kept under the cloths. It's not visible from outside. And in this, what we get is the tracing of the sugar values throughout the day. It can be kept for 2 or 4 days. So we get the readings of patient's glucose levels. So we can have an idea of when is the blood glucose level rising, when is the glucose level dipping. So based on that, we can adjust her doses of insulin, or if required, the oral anti-diabetic agents. And there is also one thing like insulin pump, in which there is a continuous delivery of insulin. Like what we discussed is that we are injecting insulin at fixed times of the day, like 3 times or 4 times daily. In insulin pump, the pump itself delivers based on the blood glucose levels. Based on it, it continuously delivers. And if the blood glucose come down to very low, then it automatically cuts off the supply. So these are the two technological advances. And apart from that, the patients with diabetes who are on insulin, they have to monitor their blood glucose levels with glucometer. Patients with GDM who are on insulin need to have glucometer at home, and at least 3 or 4 times as advised, like fasting blood glucose level, and then post meal, post breakfast, post lunch, post dinner. These levels have to be done by the patient, and the targets are there for fasting levels and postprandial levels. Like for fasting level, it is usually less than 95. What we advise is to keep the fasting levels less than 95, and the post meals level to be kept under 120. So accordingly, if the patient, we generally advise the patient on insulin or whatever metformin or Cleverat, whatever the patient is taking. So we, for generally only for patients of insulin, they require stricter control, means stricter monitoring. Like they have to monitor 3 or 4 times a day. Those who are on insulin. Those who are on oral agents do not require such strict monitoring. So if the patient brings the record of 1 week or 2 weeks, then we can see the record of the patient, what are our values at the fasting level, what are the postprandial levels, and based on that, we can change the insulin dose or change insulin type accordingly. Great. Thank you, sir. Dr. Kancha, we'll just come to you. We have time for just one last question. So we'd like you to answer this, and then maybe we can have closing remarks and finish the session. How can technology play
a big role in future GDM diagnosis, particularly. Treatment, Dr. Chandan has clearly given us some very important points. But is there something which we can look forward to as far as GDM diagnosis is concerned, Dr. Kansha? Ma'am, are you there? Has Dr. Kansha dropped out? Who would like to take this question? Maybe someone else can answer this question. Big role of technology in future GDM diagnosis. Would somebody like to answer this one? Anyone who feels comfortable? Dr. Chandan, would you like to add on? I think so far as diagnosis is concerned, at the first antenatal visit, whenever the patient visits for the first time after getting pregnant, after getting to know that she is pregnant, at that time it should be a universal thing to check her blood sugar levels, and the criteria used at this point to diagnose diabetes should not be that of GDM. The criteria should be that of a non-pregnant woman, because we are trying to diagnose the pre-existing diabetes. We are not looking to diagnose GDM. GDM, normally the screening for GDM is done at 24 to 28 weeks of pregnancy. So if the patient comes at say 8 or 9 weeks of gestation, that is after getting to know that she is pregnant, at this point of time, we should check her blood sugar levels, and the criteria which we should use at this point is the non-pregnant criteria, so as to diagnose the pre-existing diabetes. Great. And if the levels are normal, then obviously she has to undergo a glucose challenge test or the screening for GDM at 24 to 28 weeks of gestation, which everybody has been doing. Yeah. Dr. Madhulika, would you like to add something to this further? Yes, we are these days we are doing a routine screening for all patients as soon as they get pregnant, and at the first antenatal visit only we do a glucose challenge test with 75 gram of glucose, and if it is more than 140 we tell them that she is a diabetic and we have to treat her like that. There are many recommendations. Again, there is a controversy here, Kavita, because few people, they say that if you see that HbA1c is more than 5.9, then she is an overt diabetic and she has to be treated like a diabetic in pregnancy. And few people, they say that do a glucose challenge test, which we are doing in our hospital. We do a glucose challenge test at the first antenatal visit. And some people, they are relying on the fasting blood sugar. If that is high, then she is an overt diabetic. But a routine screening of all antenatal patients. Now, previously we used to only see the high risk factors, like patients who were in high risk, we used to screen them. But now the recommendation is that you should do a regular uniform screening of all patients. Even if she is a 19-year-old lady who has come to our OPD, even then in that lady also, we should do a glucose challenge test at the first visit. And in every trimester, this has to be repeated. And many times we see that in the first trimester and second trimester, she has been fine. And at 32 weeks, when we do a GCT, she has turned out to be a gestational diabetic. So irrespective of the high risk factors, because it also depends on the ethnicity. And Indians, they have, the Asian population, they have a high risk for developing gestational diabetes. So these days, the recommendations we follow is uniform screening for all antenatal patients. Basically, and this has been a major, this is a major breakthrough, because now we have been diagnosing more and more gestational diabetes. You will not believe that till now I was having my OPD, and till now I had seen 7 patients, and out of them 4 were gestational diabetics. And I thought that today only we are going to have a panel discussion and see what the incidence of gestational diabetes is there. I guess we'll have to modify the statistics soon enough, the way it is increasing this problem. But then you're right, the more the diagnosis, the better it is for everyone. Yes. You know, it's better to be safe rather than be sorry, is what I was trying to say. Yeah. So, and these days there are many mobile apps also. Everybody is carrying a smartphone these days. And as soon as they get pregnant, baby.com, know your pregnancy well. There are various apps which they download, and then they themselves tell us, look, I am in this week of pregnancy. I'm talking about the population which we cater. So everybody is carrying a smartphone.
So there are many apps also which they download, and they can see the glucose chart, and also technology is advancing, and there are many apps which are being downloaded in the smartphones, which tell us that how your sugar monitoring has to be done. Everybody is very particular about the diet in pregnancy, and there are a lot of we always tell the patients that you should always filter out the information. You should not go for all information which is available on social media, but if you go to the websites which are medically they are correct, if you go to that website and then you know your diet, that is correct. So everybody, as soon as they get pregnant, they download all these sites and they are regularly monitoring these. So I have seen that social media has also played a lot of role in creating awareness about gestational diabetes. As soon as they are diagnosed, they go to various websites and they start telling that, okay, I have to follow diet and I have to follow these sugar levels. So they are also knowing this. But yes, we have to always put this into their mind that what is right and what is wrong, because there are many wrong things also which is there on social media. So they should not go towards that side. All medically what is right, they should go to those sites, and like sites which have been said by the WHO sites or the medical, the reputed sites, they should go, and then they should create their self-awareness. Great. Thank you, ma'am. Like they say, as little awareness is dangerous, more awareness of wrong information is even more dangerous. So that is, of course, a big point that you have, because this is something everyone notices, anyone who practices today, that there is a lot of spurious information around which could, mess up with anybody's health, and especially a pregnant woman's health. A lot of good points have come out of this discussion. One discussion will never be enough for this important topic. But the main points which seem to have come out of this is, first, of course, I would like to reiterate the communication bit that every single panelist has, spoken about, how important it is to start communicating with the patient right from maybe the preconception stage, and then, of course, on to the end. Second, testing. I guess there is, the more you do, the better it is. Like I said, better be safe than sorry. And third, of course, a personalized approach is very important. It is very important to do a one-on-one basis with every patient and figure out what will work for that patient. With a broad guideline, a broad consensus, both for diagnosis as well as treatment, would be nice, so that the rules and the steps are clearer for everyone, all the practitioners to follow. So hopefully, everyone would work more towards that direction. And like they say, controversies will die a natural death, and we'll have a clearer picture on how to go about everything. Thank you so much, everyone. It has been a very, very interesting discussion. I have learned a lot. I did not know so much about this topic, and it is a very, very important topic that we've discussed today, and I'm so glad we did. So thank you so much all for joining me. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Kavita. Thank you. Now we have a special guest with us, Padma Shri, Dr. Professor Sheshai. He'll be speaking with us. Dr. Sheshai is founder, patron, Diabetes in Pregnancy Study Group of India. He's a former professor of diabetology, Madras Medical College, and also a member of expert review committee to frame global guidelines on diabetes and pregnancy by the International Diabetes Federation and World Health Organization. Back home, Dr. Sheshai is a chairman of Dr. Sheshai Diabetes Research Institute and Balaji Diabetes Care Center, a multidisciplinary diabetes care hospital providing services for more than 25 years. Thank you, sir, for joining us today. Over to you, sir. Okay, thank you. This is Hirmani Singh. I'm very happy to participate in today's. So I heard a beautiful lecture from other colleagues just now, and many of them spoke about the diagnosis, treatment, everything is okay. Now let me see my own ideas and our DIPSI guidelines, Diabetes Study Guidelines, as well as Minister of Health guidelines, I want to share with the audience who we got.
So let me have my first slide. That's why I put my slide as heart of the matter. Because here I want to share with you the enormous work you have done and published with almost, I've been working in this field for the past 40 years. 1980 we started the Diabetes Parent Service in the Institute of Obstetric Gynaecology in Chennai. So that the outcome of that I'm going to share with you now. Heart of the matter. Here I would like to share again with you people why should we treat hyperglycemia in pregnancy. So this is a very fundamental question, but let me see how I can convince you, which is very necessary. So now what is happening in this world is estimation and projections of the number of people, but in 20 to 79 years, the diabetes in different editions, millions will be like this. It's unfortunately so high, 2019 463 million, 2021 to 537 million, 16% increase, and 2045 going to be 780, 44%. That means there's no question of coming down, it's always going up. So we are going to face 2045 almost 50% increase in the prevalence of diabetes. Now, pre-diabetes approximately 380 million, which is likely to increase to about 480 million by 2040. So everything in the upscale only. That is why diabetes is an epidemic of unprecedented magnitude. Now they call it as a pandemic. So because it's uncontrolled disease now going around, so this idea person calls them as a pandemic. Now after this, what we can do now would be prevalence of diabetes in India. Now in 2021, according to the International Diabetes Federation, 537 million people have diabetes in the world, as I told you earlier. Out of them, huge number, India accounts for 1 in 7 of all adults are living with diabetes worldwide. So we are leaders in that after China. So now what are the current major issues in India? Number of issues are there. In that I will talk about the healthcare system, ever increasing prevalence of diabetes. That is all I told you just a few minutes ago. So what is happening nowadays in the country will be, many of them people mistake. Detection of diabetes does not mean prevention of diabetes. So many people, laudable aim, they say now we'll defeat diabetes, beat diabetes, let us fight diabetes, disseminating diabetes, demystifying diabetes. This all the for a number of people going on telling the country, this is all you must do. This is okay. But what is most important here will be now, these methods are unmasking already diabetes, but nothing has been done to. What we need is primordial diabetes, that is, disease should not develop. It's a big question, big problems are going to face. How are we going to prevent diabetes? That is what I'm going to discuss now. Now we look at this slide here. Is it possible to achieve diabetes-free generation? Then whom to focus? Who will be helpful to us to diagnose and treat to avoid diabetes in the world? Here, this is a basic thing. Developmental origin of health and diseases. Whatever disease may be there, most of the people have genetic phenotype, genes. Not only genes are enough, they must also, something must happen. It could be intrauterine environment in the mother's womb, or after the child is born, could be postnatal environment. This is what we call epigenetic. That means gene must be there. At the same time, there must be epigenetic phenomenon must be there to unmask the disease. That is why what we call GDM, genetic loads the gun, and environment triggers off. So one did not say, oh, diabetes genetic is no, it is genetic, and then you must have some other factor to unmask the disease. So now we'll discuss what is the environment disease going to take place. Now, epidemic of diabetes mellitus, all of us know, most of us will think like that. The increased prevalence of diabetes usually attributed to aging population structure, urbanization, obesity and epidemic, and lastly physically. All these are correct. But what is missing, what is not focused will be here, where all these factors contribute to the epidemic of diabetes mellitus, intrauterine exposure, as I told you a little bit earlier in the previous slide, and gestational programming are emerging as the potential risk factors. So we're almost coming to the point of whom to focus.
Now it is an interesting study here, which I know how many people know about this gentleman. Chanakya is a big philosopher of the country about 2000 years ago. Very, very, very erudite scholar. He said that time itself, when life gets seeded in mother's womb, age, deeds, wealth, education, death, all are determined right there. So he attributes everything to his mother's womb development. So that is in a way it is correct. How? I'm going to discuss again about this point. Now after that, so many years back, now David Dwarka said the body's susceptibility to lifestyle diseases was programmed intrauterine. Same thing what he told about 2000 ago with Chanakya. Dr. David Parker has also told that everything is programmed intrauterine. So that means some truth must be there. Let us see how is it possible. Now, to take diabetes mellitus, as I told you, every disease will have two aspects, genetic and as well as environment. So, it is a genetic means innate destiny to develop diabetes or going to be the intrauterine environment, which is the cause for the diabetes mellitus. So, it is a wonderful data study I am going to show you now. Intrauterine programming. Gestational program is a process whereby stimuli, metal fuels, or stresses that occur at critical or sensitive periods of fetal development permanently change structure, physiology, metabolism, will predispose individuals to adult life. So it is a very beautiful statement made by Lucas. And again we come back to the same statement that fetal origin, this is what David Parker. So it is almost we have come to a point that fetal, everything is started in mother's womb, that is fetal origin. So now we can easily understand what I am going to share, I am going to discuss now. Here it will be the evidence. I made the statement. So another beautiful statement here, exposure to diabetic environment in utero. So associated with increased occurrence of impaired glucose tolerance, a defective insulin secretory response in adult offspring. Independent of genetic predisposition to diabetes. That means very, very clear. One should not go on saying no, it's genetic. Independent of genetic, it can occur. So genetic can be there, but environment is more important. How? What is the proof? Here, animal experiment model has shown Western rats with a low genetic risk, it may not develop diabetes. Genetic risk of diabetes, when exposed to hyperglycemic media of goat rat, so significantly increases the risk of adult. So this study clearly showed that genetic is not only important, but also most important of the hyperglycemic media in the mother's womb. So this is what the animal is. What is the human being? Here another study shows maternal hyperglycemia and progeny under child. There's a beautiful statement here. The offsprings of Hema Indians who were in utero, when their mother had diabetes, have a greater risk of diabetes compared to their earlier siblings born before the mother developed diabetes. That shows diabetes in milieu is very, very important, more than the genetic. So we'll come to conclusion now that intrauterine milieu is more important than the innate destiny. The innate destiny will be there, but still among these two factors, intrauterine milieu is very important. So having decided intrauterine milieu is very important for development of diseases here. We'll see, as somebody has also talking about the hyperglycemia and pregnancy here. Now look at that in 2021, the global prevalence of hyperglycemia and pregnancy in the age cluster of 20 to 49 years was assessed to be 15.8% of the live births, such a high number. Now if you look at the data here, unfortunately Southeast Asian, which in India is included, 26% will have GDM, that is almost 1/4. Only in live birth we are affected by hyperglycemic pregnancy, 84% of which are due to GDM. So this we are going to face a huge problem in the pregnancy itself. So as I think I know some speaker was telling, all those days risk factor screening was there. Nowadays it is given up. All women should be screened for gestational diabetes mellitus, even if they have no symptoms. So having decided, because we do that. But next question will be here. Again, somebody was discussing about this fasting blood glucose or 2-hour post glucose with serum glucose. Which test is ideal to diagnose GDM? Fasting, 2-hour PG. So this is a confusion going on. Many of I'm not settled the matter.
Now I tell you which is more important. If you look at that, what WHO says is, it's very clearly they made the statement. There is no high quality evidence that women under fetuses benefit from treatment only the fasting values abnormal. He has told no point. Also it shows benefit of treating GD women identified primarily by post-load values. That means fasting blood sugar is not that important compared to post-load values. And again, elevated postpartum plasma glucose may be more predictive of the potential for fetal morbidity compared with fasting plasma glucose. Therefore, fasting glucose values used alone do not predict the need for pharmacological therapy. Yes, ladies and gentlemen, we have to focus in future only postpartum or post-glucose test, diagnostic. And evidence for diagnosing GD with post-mortem. What is evidence? This is a very beautiful study in relation to fasting plasma glucose. There is considerable variability between countries noted in the hyperglycemia and pregnancy outcome, adverse outcome study with fasting blood glucose diagnosis only 22% of GD in women, Bangkok and South Asian countries, compared with up to 71% in the human US centers. So people get confused. What study done in USA is one applicable, not applicable to South Asian countries at all. It may be 71% can pick up fasting, whereas South Asian countries fasting will not pick up 22%. So what happened? We also did the study in Chennai. A low diagnostic rate of FPG has also been reported in the Asian Indians. The fasting plasma glucose, that is 92 milligrams, diagnosed only 24% of GD. So this shows ethnically they are different group, and don't compare you and say we will do the fasting. No, that's not correct. We are different. I discuss again about this point. Now, again, somebody was telling when I was listening to them, glycosymoglobin. I tell you how many people can afford to do this test in the country, particularly in rural areas. That is why I am appreciating WHO. WHO clearly made this statement. The 2013 WHO guideline does not include A1C as a means of diagnosing diabetes in a pregnant woman and for monitoring. They may be affordable, society may be there, but in rural areas and suburban areas, I don't think anybody can do. One. Second point is sanitization is very, very important. That is why WHO said it is not necessary. It is not necessary to do the HbA1c to diagnose GDM. A1c is not possible in all healthcare centers. Now, practical problems in diagnosing GDM. Now I'm going to come to the point of diagnosing GDM, which somebody raised in the previous session. So all the diagnostic criteria require women to be in the fasting. But most of the time, pregnant women do not come in the fasting state because of the commutation and believe not to fast for long hours. Field experience, what we got. So this not only we are telling, even WHO has told, you follow this statement, real world situation. I am going to share with you what is the other part of the world. Now, percentage of pregnant women attending the prenatal clinic in the non-fasting state. This is a practical study done in those suburban area where they found out in the total people screened were 4,893. Out of them, only 369 came in the fasting. That shows 80% of the people, 21 were in the non-fasting state. This is a practical question happening in the rural areas. So how do you expect them people to come in the fasting state? Not all possible. So if we ask them to come again they may not turn up, and we are missing number of people. So non-fasting is most of the people to come. Then next point will be here. It is not only in India. The dropout rate is very high. When a pregnant woman is asked to come again for the glucose test, this is what we do in other developed countries also. This year is so attending the first prenatal visit, the fasting state is impractical in many settings. That's again so experience of the international diabetes group. So they also feel that it's not possible. And finally, a fasting blood test at the antenatal booking is often inconvenient even in the UK. So it shows it is a universal phenomenon that pregnant women is difficult to come with fasting. They ask to come again, particularly in the rural areas. They may be working in the field. They can't come again next day. They will lose their income. So they avoid coming second time. So what we should do,
The prosperity study was undertaken to elucidate a test procedure irrespective of the last minute timing to diagnose GDM. In this, when what we concluded was a 2 rpg more than 140 milligram or 7.8 millimole 70 gram oral glucose administered to pregnant woman in the fasting or non-fasting state. This is very easily understood. Fasting and non-fasting state without regard to the time of last meal is able to identify woman with GDM. So that is what we found, and it got published in the Acta Diabetology a long time ago. Single test procedure to diagnose gestational diabetes. That is our conclusion. Now, some people have also done in the earlier period also, and they also feel that fasting plus sugar not possible in many places. Now, how do you expect the rationale? What is the rationale for me to suggest that you can do in the fasting and non-fasting state? This is a very, very important statement I'm going to make here. Everybody must carefully follow what I'm going to say. After a meal, a normal glucose tolerant woman or man, whoever will be there, would be able to maintain euglycemia despite glucose challenge due to brisk and adequate insulin response. Whatever you give, blood sugar won't go up. That is because he is a normal person. Suppose, whereas a woman with GDM who has impaired secretion, her glycemic level increases with the meal, and the glucose challenge, the glycemic excretion exerts further. That's very clear. You can easily make it out what is the problem with the GDM. So this is what the explanation given to me when they want to publish in the Acta Diabetology. And then one more statement here, performing the single test procedure, the fasting and non-fasting state, irrespective of last minute timing, is rational, because as glucose concentration during the glucose tolerance test will be affected least by the time since the last meal in a normal glucose tolerant but will in GDM. So these two statements very clearly says that in a normal person nothing will happen, normal woman nothing will happen, whereas she has going to be GDM or that man is going to develop diabetes, whether it's fasting and non-fasting glucose, it is going to go up. So this is a very simple explanation given for the publication. Now another point I would like to share here will be, now look at this, 140 milligram blood sugar level, 50% of the beta cell function is lost. That is why we get the target of 140, because here in the non-pregnant adult, 2 hour post glucose 140 milligram is considered abnormal during abnormal because it's got impaired glucose tolerance IGT. Advanced treatment, then why can't it be considered abnormal during pregnancy? That is why we kept 140 as a target value to diagnose GDM. Now, this is a very interesting study. A number of studies have shown diagnosed GDM with 2 rpg more 140 milligram and treatment is worthwhile with a decrease in macrosomia rate, fewer emergency sections, serious perinatal morbidity, and may also be improved the woman's health related quality of life. So it is very clearly, I have mentioned now here, only one test, and target value is 140 to diagnose GDM. Now, another thing I want to share with you is a very, very important study to prove this is called RCT. This means the study cannot be repeated again. Here, GDM diagnosis and management, DIPSI diabetes study guidelines, the evidence based. Okay, here we take people control 140, GDM with treatment 70, they are not accepting treatment, they refuse treatment. The Jat people in Jammu and the area, they refuse to take treatment. Then when we followed up what happened, stillbirth was more in them, 4%, the preterm birth, 2.8%, people, control people, it is double in GDM with treatment, but whereas it is very high in the people who did not accept it, almost 8 times. The respiratory syndrome is about 2% developed in GDM not accepted. You will see everything is very high in the people who didn't accept treatment. And finally, macrosomia more than 4 kg, 1.4, double to 2.8, very high again 8 times. So they clearly showed GDM diagnosed 140, not accepting treatment, all the problem will start. Treatment accepting, those who accept treatment, number of problems come down. So conclusion, this study proves advantage of adhering to DIPSI guidelines in the diagnosis of 2 rpg more than 140 gram and management of GDM for a significant positive effect on pregnancy outcome. So this study, I don't think anybody can do this. That's all. This is proved because we cannot, by EQBus, you can't allow any woman having known that you got a problem
allow her not to go, not undergo treatment. If they are done, if she doesn't want to treatment, it doesn't matter. You can't allow them to do any test, any study. Now, I'm coming to this study conclusion here. WHO observations and recommendations. It is continuing. It is no change in there. OGT is resource intensive. And many health services, especially in no-source settings, are not able to routinely perform OGT. It is a problem throughout the world, developing world. In these circumstances, many health services do not test for hypertension pregnancy. Therefore, options do not involve an OGT are required. So what they say here will be, for women, the request to attend the fasting for blood test may not be realistic because long travel distance to the clinic in many parts of the world increased tendency to nausea in the fasting state. Consequently, non-fasting testing may be the only practical option. There is no problem at all doing this test. That is why WHO recommends this one, a single test procedure to diagnose GDM. Now this part is over. Now, to convince you, a single test procedure, somebody was telling, don't confuse yourself. A single test procedure included in the APA test book of medicine, RSA test book of diabetes, and McMaster test book of internal medicine. So all the test books have included this single test procedure for diagnosing GDM. Now we'll come to the when to screen. Somebody was telling also screening 30 to 32 weeks is too much, 24 is too much. All forget about that. 24 to 22, forget. These are old test books. Now I'll tell you why should we screen earlier, when to screen. This is evidence. Look at this slide, you'll know. Here, in rational for screening in early weeks of pregnancy. What is rational? Because embryonic stage, central nervous system, before 8th week, everything develops, more sensitive. Heart again moderately, but still again less than 6 weeks. So by the time, look at this slide, by 9th week, almost all the development is taking place. So what is the point in screening in 24th, 28th, that trimester? This clearly shows if you don't screen and take care of them, the chances are there that in the child, the baby born may develop some other complications. So it is better to do screening earlier. I'll tell you when to screen. So at least by 9th week should be taken to screening. Screening is very essential. Now, what government tells will be diagnosis and management of gestational diabetes, technical and development government guidelines. Government themselves says now that GDM national guidelines 2018 latest, the first testing should be done in the first trimester as almost 1/3 of GDM positive women are detected during this period. So now I am sure you will get convinced whatever studied in the book, older book, do not keep it in mind. This is the latest idea given by a number of people sat together and this guideline was brought in. Now, this another evidence I am going to show here. Manifestation of GDM in the early weeks of gestation is common. In this study, about 11,000 people were screened. In them, first trimester was 31% had abnormal glucose levels, and by second trimester 42%, and third trimester 25%. So, with managing 32 weeks, what is going to happen? You will miss most of the people who already become diabetic. So that is why this 31.5, 1/3 of the people do develop GDM in the first time. I don't know what call diabetes a pregnant. GDM means GDM, that's a pregnancy, gestation means pregnancy, diabetes. What is the question of asking? GDM means 32 weeks, GDM means, don't give your own classification. Gestation means in pregnancy, diabetes. It is more common the first trimester. So coming to summing up here, a single test procedure uses oral glucose, measuring plasma glucose 2 hours after ingestion. This, I think most of the obstetricians nowadays in the country do follow this. And then most of you do know the plasma standard glucometer should be used to evaluate blood glucose scores out of the oral glucose score. So 140 milligram is the diagnostic cutoff point. The government of India has given the guidelines. Now, point of cut is you can't do all the time lab value. It's not possible. So this study has shown the capital blood glucose value at a 2-hour plasma glucose level of 140 milligram may be recommended for the diagnosis in healthcare centers where laboratory technology is not available. Please do not expect you are living in cities. There are places where they can't get the laboratory test. So you can use 2 meters. I recommend one touch or accuracy. These two are very, very accurate. If you can't do the venous blood,
do the capillary blood sugar. You are almost close to normal. One of these you can use. What touch? Uttar Pradesh, they are recommending AkuCheck. Government has given to the people AkuCheck. So one touch or AkuCheck. So considerable in testing pregnancy feasibility. Laboratory glucose measurement is not available, and testing with the portable blood glucose meter is only the option which I told you earlier. Now, I'm coming to a little more important point here. I know many of you know about that, particularly some people in the some areas diagnosis of GDM is an emotional issue all over the world for a woman who's in the family way and for her close relatives, spouse and in-law. So having known this emotional issue, what I suggest here will be as diagnostic method should be definitive. We should not have confusion. Okay, it is done, that's all. Suppose imagine a woman comes to you, pregnant woman, and do blood test. You say 95. Okay, agree 95. And say you have GDM, she'll be shocked. What do you mean by 95 diabetes? It is a story. A number of stories I've heard from Haryana states. So this they won't accept that. So you must get a definite test. You must do the test, proper test, and then tell you are diabetes or not. But just by doing the fasting in 96, 97, your GDM not up. So you must tell them diagnosed test, definite test. So it is very interesting slide. Now please all of you follow this slide. Very, very important. Here, WHO 1985, they recommended 7.8 millimole, that is 140 milligrams. That one comes to 99, again 7. They are not changed, again 140 milligrams. DIPSI, not fasting, 140 milligrams, and National Institute of Clinical Excellence, UK, is 78 because UK is ideal because this kind of multi-ethnic population there, it's 740. So what is troubling us mostly in the world, including Indian doctors, some people who are all, I call them Indian Americans. There's an NDDG group, National Diabetes groups, they say 9.2, 165. How can you accept this value? And then Carpenter question said 155, 8.6 millimole. Same way, current CDA, 9 millimole. And great people, International Diabetes Study Group people, ADA, again 8.5. So we have none of them are suitable for us. None. If we tell 165 that child will have all the problem, obesity will have child born, infant will have all the complications what you are expecting. Maybe don't worry about this American guidelines. At least they follow these 4 guidelines. That's why I'm telling you here. Why should we follow the guidelines based on Caucasian population? We are not Caucasians. So the Caucasian population, why should we follow? Here I made statement. Caucasians versus non-Caucasians. No difference anatomy. Between them, no anatomy. But metabolic difference exists. That must very, very understandable point here. It is not, we are not talking about anatomy. Yes, what is good for one ethnic population need not be good for another ethnic population. That is why that's a very important message. Indian problems need Indian solutions. So please do not say American shows, ACOG says, IDP says are all followed about it. That is not applicable for us. It may apply for Caucasians. Non-Caucasians or ethnically people, it's not applicable because all the guidelines what they are telling are based on their population, not non-Caucasian population. So please do not quote anytime, anywhere, ACOG says, ADA says, all followed about that. Indian problem need Indian solutions. So now target blood glucose level should be that of normal pregnancy 90 or 80. There is the range. And somebody was telling me, one gentleman there, 95. I say, how was the 95 acceptable? Even accepting American guidelines, 92 is a cutoff point for diagnosed GDM. How can we target 95 treatment? How is the logic? So don't follow that American guidelines again. Say their value is so upset. 92 fasting, target 95. How is it possible? So please follow this 90 or 90. That means what you should do, the level should be that of non-pregnancy. Do not worry about anything else. Postmortem 110, 120, meals should be on. A number of studies have shown that this should be the cutoff point for diagnosed GDM because the goal is to obtain newborn babies birth weight appropriate for gestation age between, all of you know about that, 2.5 3.5
a step to prevent offspring development diabetes. So if we don't do that, the chance that that child will become obese or a big baby. So to have this baby within normal range, this is cut-off value. Diagnostic value is different, but target value is entirely different. The target glucose value should be that of normal pregnancy. Now, one more problem what we are facing in the practice will be postpartum screening after GDM. Aiming for universal coverage, and the most obstetrician will find difficult to get these people to screening postpartum. What I suggested here is simple. The public health care ASHA workers are already performing GDM screening. Most of them know about that. So what you should do that will be the same test procedure can be followed, detect glucose intolerance in the postpartum also, because when you do the same thing like that, what I told you, if 140 milligrams diagnosed, which was GDM, now we call impaired glucose tolerance, more than 200 milligrams, they are called diagnosed GDM. So the simple test can be done in the postpartum period. One need not worry about using OBGYN, not all necessary at all. So postpartum oral glucose testing, justable step towards diabetes prevention. That is diabetes prevention. That's what told by Sarah Metzer. Now, I am going to share one very important point. Very important. Postpartum screening or glucose. The latest idea will be here. 2-day postpartum glucose tolerance testing. 2 days. Suppose the child delivered next 2 days. Within 2 days, test glucose tolerance testing are similar. Diagnosis value. What you can do at 4th or 12th week. The second day itself is as good as doing 12th week in predicting impaired metabolism and diabetes at 1 year of delivery and associated with a nearly 10% adherence to the test. Thus, changing the timing of the glucose tolerance testing will become so. Henceforth, you try to do in your clinic, the child is born, or 2 days, do the test of the mother, and if it is normal, that means she is not going to develop abnormal or at least for 1 year. So, conclusion here. GDM is an important problem at all levels of economic development. Immediate and pragmatic considerations may limit the resources devoted to this issue in developing countries. You are there. So, friends, ladies and gentlemen, here this point, you all should know the community here needs a simple economical test, factors infusing timely initiation and completion of gestational diabetes mellitus screening, diagnosis, a qualitative study which was published in terms of the PM's pregnancy. This same study showed stresses the importance of guidelines, diagnostic criteria which are simple and feasible on the ground. So, make it guidelines will be here, a single test procedure with a single glucose value. You are going, this is recommended by the Minister of Health of India. Why the question of asking why do this test, 3 tests, 4 tests? When the Minister of Health has told this test must follow, why should worry about that? To diagnose, why should I doubt at all? Because Ministry of Health cannot give wrong suggestions. To diagnose GDM rational, cost effective, and cause negligible inconvenience to the experiment. I am sure now from now on, all of you will accept that single procedure should be the test to be diagnosed, used to diagnose the GDM. Now, prevention of non-common diseases, preventive measures against NCD should start in the intrauterine period. Again, coming back to the point, intrauterine start or non-common diseases and continue throughout life from the early childhood. Prevention of type diabetes must begin in utero and continue throughout the life course. Now, what Gynaecology has told has come true now also in this also. And finally, GDM offers important opportunity for development, testing, implementing of clinical strategies for NCD prevention. So, it's all in the hands of the obstetricians. If GDM is very important because that's the only way it can prevent the NCD. So, now I'm going to share a few minutes it will take. Whom to focus for the premortal prevention? I raised the question in the first initial itself. Whom to focus? What is the evidence? Here, diabetes prevention program, a very interesting study done in September 2001, Center for Diabetes Control and Prevention (CDC) issued a press release stating that twin epidemics of diabetes and obesity continue to threaten the health of Americans. So they are very conscious about that. And diabetes prevention program was introduced. Fantastic, very good idea. Then what happened? What happened here? You will shocked to know in 2001, it was 6.1% of the US population had diagnosed
diabetes. Currently, it is 10.5, almost double to 21. So that shows diabetes prevention program in America is a failure. So what is good? Then what should we do? So obviously this is not successful program. Then what is the correct program? Then what could be the successful program? Now for this you must go to the basic thing here. Development origin of any disease, I told you in the initial itself. Why it is developed origin? Because the ovum is tied with the mitochondria. But the sperm contains a few, even those few do not persist in the offspring. The beautiful statement made. And then at fertilization, it is only the nucleus of the spermatozoa that enters the ovum, and thus all cytoplasm, mitochondria, and mitochondrial DNA are exclusively maternally inherited. All things in the mother. So it is a very important statement made here, development origin. That is why hence female gender, the key to diabetes prevention. The whole thing depends on them here. We have to start with the healthy pregnancy, the low birth weight, a large gestational age birth weight. What could happen to result in the elevated adult life, elevated risk for obesity, diabetes, hypertension, and or NCDs. Not only that, intergenerational transmission from one child to another child goes on. So maternal health, the link to the NCD. That so it clearly shows mother is more important for us to pregnant woman must most important for us to take care of the non-communicable diseases, including diabetes. So finally, what is needed for premortem pregnancy will be here. It is essential to take timely action from the preconception care to confinement. Ideal to screen all pregnant women for glucose tolerance. The first time I would suggest before 9th, that is 2 months, 9th week. And then achieving glucosamine on them and ensuring adequate maternal nutrition, based on all property, small gestation and large gestation who are prone to develop diabetes. Finally, this message I think will put in all clinic, put in the board consideration. Your child's health is in your hands. So check and control your blood sugar. That is should be slogan I introduced recently. So another final message will be, I have told at least half an hour what I want to say. Now, carry your message. Most complete problem in this world, in the universe, has a simple solution. What is simple solution? One test, 70 gram glucose, irrespective of last meal timing. That is one test. And then one value to diagnose GDM, 2 pg more than 140 grams. And one target will be 2 pg around 120, less than 120 grams. So they remove this number, 70 gram, 140, 120, that is GDM. Now, friends, coming to conclusion, the home is more important than the home. So it all starts in vitro. Hence, for diabetes-free generation, focus on the fetus for the future. Now, I have taken the pledge. I will pledge to prevent diabetes. All of you are listening this lecture should also take pledge to prevent diabetes. Thank you very much for your passion daring. Looking forward to meet you again somewhere. Thank you very much. Dr. Shashia, thank you so much for this very interesting session, which has been entirely possible because of your critical insight on GDM and the nitty-gritty on the disease itself. As you just rightly mentioned, every problem in this universe has a very simple solution. And indeed, you have made it very simple for all of us, with your practical, with your pragmatic solutions that you have offered through your very educative and enriching slides, which have benefited one and everyone in this who have been listening to you for the last 30-45 minutes. Thank you so much. Thank you so much. Thank you very much for a nice comment and observation.